if, with your permission, program can be initiated on time. Very much. It should be on time. And thank you so much for giving me this, prestigious seniority. But I'm as a member of the team as all of us are. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Yeah, Apurvaji, you can guide Thank you, your sir. Ekta Society team. Thank you, sir. Initiate. Yeah. Rakesh ji, I guess we can go ahead. Yes. Yes. Kanika, Shreya, you can start now. She has the soul of a storm and freedom of the wind. She has eyes like the stars with moonshine within, with the strength of the sea and lightning in her toes. She dances on the breeze of change wherever she goes, hotter than a volcano and deeper than the oceans, a whirling, swirling myriad of feelings and emotions. She's daughter of the earth, primordially inspired. She's water, she's wood, she's earth, she's fire. मैं आफ़ताब यार हूँ, मैं आसमान सितार हूँ, मैं नदी पे किनार हूँ, मैं खुद एक संसार हूँ, मैं आग का फुवार हूँ, तंदुरुस्त बीमार हूँ, मैं खत्म नहीं बार बार हूँ, मैं एक नहीं हजार हूँ, मैं सादगी भरमार हूँ, मैं जोश भरी तलवार हूँ, मैं अनजान जानकर हूँ, मैं जम्मू बिहार हूँ, मैं युवा ललकार हूँ, मैं बूढ़ी खकार हूँ, मैं कुछ बेशुमार हूँ, मैं कुछ कमी शानदार हूँ, मैं वक्त की पुकार हूँ, मैं वक्त की पुकार हूँ। इन सुंदर पंक्तियों से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। Good morning. A warm welcome to the Honorable Principal, our respected teachers, our partner for today's event, Vishwa Yuva Kendra, various other organizations, my juniors and my fellow students. Greetings to all. We all have gathered today for the NGO meet of the Social Work Department with the theme Sashaktikaran, Women Warriors in COVID-19. I'm sure you all are well aware of the organization and our partner for the event, Vishwa Yuva Kendra, but I will still like to take this stage to introduce them. In the year 1959, the Executive Committee of the Indian Assembly of the Youth concluded that the National Youth Center should be established in order for the youth work to be developed on the scientific lines of the country. The Youth Center was to provide training in youth work to the youth workers. Vishwa Yuva Kendra for sure has a unique history. Its vision is to enable the youth to participate in the process of nation building by fostering initiatives to unfold the potential of youth. In view of the pandemic, VYK utilized online platforms and conducted various webinars which aimed to enable youth and make them aware about the needs and requirements of the most vulnerable sections and develop strategies to reach out to them. Before moving on further, I would like all of you to see a presentation on Aditi Mahavidyalaya and all about the NGO. I request Pujita to play the presentation. Aditi Mahavidyalaya, University of Delhi, was founded in 1994 with the purpose of women empowerment by providing knowledge and opportunity to young girls from the marginalized population of Delhi's rural outskirts. Aditi offers more than 30 courses across different streams. One such department under Aditi Mahavidyalaya is the Department of Social Work, which was soon established in 1997 after the college, with the vision to respond the intersectionality of social justice-related privileges and oppressions to educate, advocate for, and promote social equity and well-being. The mission of the department is to inculcate the skills, techniques for taking the responsibility of bringing social change at the grassroots level and management of social welfare. The department conducts programs covering the whole spectrum of initiatives to give the students practical knowledge, application of theory into practice, and also different approaches to do so. The department regularly conducts guest lectures and seminars to enlighten the students with a newer and different perspective towards different social issues, along with getting a clearer picture of the ground realities on different levels of management, advocacy, research, etc. The department has an individual independent society for the management of all activities and events conducted in and for the students of social work department. The department conducts excursion, rural camps, and organizational visits for the students to get hands-on experience in working with different communities, dealing with different social problems.
the department also organizes yearly events of Pearl Memorial, Diwali Mela, and NGO Meet. Pearl Memorial Day is now celebrated in the fond memory of our late ex-student Pearl Gupta. Diwali Mela is conducted as a cultural event where during the non-COVID times, all the NGOs in collaboration with the department were given stalls to display their products or services for marketing and sales. NGO Meet is conducted with the aim to connect the students with academicians and professionals. This provides a platform to the NGOs to bring awareness about their initiatives and organization and helps the students to enhance their skills of networking, funding, planning, organizing, and communicating. It also assists them in learning attributes of professional social work to deal with multifaceted problems of our society. The theme of the NGO Meet for 2022 is Sashaktikaran Women Warriors in COVID-19 to acknowledge the contribution of those who fought the pandemic up front. The COVID-19 pandemic unleashed an unprecedented humanitarian and health crisis. The war being fought by doctors, nurses, and other healthcare workers, frontline workers, including police officials, sanitization workers, and scientists. From putting extra working hours to save lives and contain the spread of novel coronavirus, getting infected with COVID-19 to staying away from their families and friends, and finding families in their patients to even being ostracized by the society. Frontline and healthcare workers have faced all this in the past year and a half. The theme of the NGO Meet is to acknowledge the contribution of women COVID-19 warriors who did not bat an eye and faced all the challenges head on. The topics for today's panel discussion are frontline female warriors, home workplace stress, increasing challenges in daily life, and agents of change. Thank you, everyone. And now I would request Shreya to please carry on. Thank you, Pragya, for the presentation. Now let's move forward. Ya Devi Sarvabhuteshu Buddhi Rupen Sadintita Namastasya 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 Namo Nama. जो देवी सभी प्राणियों में बुद्धि के रूप में वर्धित है उनको नमस्कार, बारंबार नमस्कार है, आपको मेरा बार बार प्रणाम है. Let's welcome Pujita for the Saraswati Vandana. Saraswati,
Thank you so much, Prajita, for such a peaceful and calming Saraswati Vandana. अब मैं डॉक्टर सुनीता बहमनी, टीचर इंचार्ज डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप कुछ शब्द कहें. Thank you, dear. Thank you, dear Shreya. Good morning, dear all. I am glad to share the keynote of today's NGO Meet, Sashaktikaran. Sashaktikaran, जो जैसे नाम से ही पता चलता है, empowerment. We are talking about the empowerment of women in different walks of life with all state of our society. Women, as it denotes by our students itself, that women is a full of devotion and determination. And women, corona warriors, are instrumental in all over the world's war against coronavirus. These range from women holding key position in the government to countless ordinary citizens. We are working as warriors, as health workers, caregivers, innovators, and community organizers during the pandemic. So, जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, हम यहाँ पर वीमेंस की एज एन स्टूडेंट हमारा कंट्रीब्यूशन, एज एन टीचर, एज एन स्कूल टीचर, हेल्थ वर्कर, and as in the part of the different NGOs, we are battling against the coronavirus, and we are giving example to our society how to deal the situation, that situation about which we cannot even not imagine कि ऐसा भी कभी हो सकता है. For a woman, for a school teacher, it is a very tough task. It is very tough to deal handling all the distress call through that difficult time. And then after coming back to their home, the teachers, the women have to take care of their household activities. The story is not a silent story of only the school teachers. The college teachers, the students are the example of as the instrumental how to deal the situation. The story is same for all the frontline worker, and it was almost very difficult for the doctors and for all the healthcare professionals who are directly involved in the caring of COVID positive patients. I myself also the witness of the same, being the part of the family of the doctors. It is very difficult to manage and to see all the persons who are in pain, and the person who are dealing the patient, he himself or herself is also the pain. But that pain is totally, the pain is totally done out of the mind. Whenever we are dealing the society, we are dealing the patient, and we are dealing to the persons who are the victim of the different COVID-19 situation. So battling the pandemic, the doctor had to ensure that they should not turn out to the super spreader. They had no choice but to attend the outbreak and take enough precaution to safeguard family and self itself. Everything was very new to us. Being a teacher, it is a very challenge to me. And but we have to deal that pandemic situation. We the teachers, many of us are not so much techno savvy, but somehow we managed conducting classes and fieldwork. I'm just quoting example of myself. I have very little knowledge regarding that of technical things, and running Google Classroom, taking meeting through Google Meet, that is a very much challenge, and I am happy that we can manage with that challenge. The situation is not normal for the housewife also. Household activities and managing all the household conditions, it is a very tough job, taking care of all the needs each and every person needs, their children, elderly, mainly who are in pain and who are sick one. It is a major responsibility. And whenever you are working as a housemaker, as a housewife, or as a working woman, that is a different multidimensional responsibility and challenge we are facing. But we shall win. COVID-19 made us realize that each and every woman is the warrior in that pandemic phase. It made us realize that there is a wide scope of
empowering the women. Although she is already empowered in many ways, but still a large section of our society is still needs to be empowered. And I am very much thankful to VYK and other organizations who are providing such a beautiful platform where we can discuss our and we can share our experience with students and with the different members of the NGOs and different type of the practitioners. So that is the very brief description regarding the 2 days NGO meet. My heartily best wishes to all the students and all the organizer. Over to you, Shreya. Thank you. Thank you, ma'am, for your words. अब मैं डॉक्टर सीमा रानी फील्ड वर्क कोऑर्डिनेटर आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप कुछ शब्द कहें. Ma'am, please unmute yourself. Yes, thank you, Shreya. Good morning, all of you. And on the behalf of our social work department, it's my pleasure to welcome you all on this beautiful day. First of all, I would like to warm welcome to our principal, ma'am, Professor Mamta Sharma. She is good leader and inspiration of our institution. She has facilitated by Honorable Minister of Human Resource Development, Shri Ramesh Pokhriyal, on 6th March 2020 on the occasion of International Women's Day. She received Certificate of Honor from Professor Rajendra Kumar Anayat, Vice Chancellor, DCRUST University, Murthal, for remarkable contribution in the field of disaster preparedness and sustainable development at various levels on the 21st January 2020 at Swami Sardhanand College. She received Outstanding Educator of the Year Award from Viklang Sahara Smiti, Delhi for service towards persons with disability sector on 15 December 2019. She received Certificate of Facilitation at National Academic Excellence Award Ceremony 2019 hosted by Delhi Intellectual Society at International Guest House, University of Delhi. She honored and facilitated with Pandit Deen Dayal Upadhyay Excellence Award 2019 by Deen Dayal Upadhyay Smriti Manch for excellence in administration and for being proactive for environment and women empowerment issues on 25th September 2019. She also recipient of Dr. S. Radhakrishnan Memorial National Teachers Award 2016 in a function held on 4th September 2016 in Constitution Club. She also honored by All India Foundation for Peace and Disaster Management and for Environmental Management Awareness. Now, I would like to warm welcome to Shri Uday Shankar ji. Sir, you have no need to any introduction because you are just like a family member of our social work department. But officially, I want to give you a brief introduction here. Sir, you are presently working with Vishwa Yuva Kendra, one of the pioneering youth organization of India, as its chief controller. An erudite professional with nearly 2 decades of experience in corporate social responsibility, training and skill development, resettlement and rehabilitation activities, project management and community development. Sir is equally at ease working with corporate sector on the one hand and with the rural community in backward regions of the country on the other. He is a postgraduate in rural management from Xavier Institute of Social Sciences, Ranchi, and is a member of a number of prestigious committees and associations, including Rotary International and the Central Policy Committee on Youth Hostel Scheme, Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India. During his association with Rotary, Shri Uday was also the director of Plus Polio program. Now, I would like to warm welcome to our enthusiastic speakers of the day, Dr. Ruchi Sinha, Associate Professor, Center for Criminology and Justice, School of Social Work, Tata Institute of Social Sciences, Mumbai. Dr. Renuka Badola, MD Pediatrics, Lady Harding Medical College,
Miss Ritu Sharma, Program Officer, Alliance India, and Miss Shalini Parveen, Professional Marriage Counselor, SPUWAC Delhi. Now, I would like to warm welcome to all the organizations present here, faculty members of Aditi Mahavidyalaya, and my dear students. Today is a big day and we are feeling very energetic. Preparing for this big day take a lot of time and efforts which the students of Ekta Society along with VYK you have done greatly. I wish you good luck. Thank you everyone for being present here and making this platform so graceful. So welcome you again. Thank you. Thank you, ma'am, for the welcome note. Now, I would like to welcome Shri Uday Shankar Singh. He is presently working with Vishwa Yuva Kendra, one of the pioneering youth organizations of India, as its chief controller. An erudite professional with nearly 2 decades of experience in corporate social responsibility, training and skill development, resettlement and rehabilitation activities, project management and community development. मैं श्री उदय शंकर सिंह जी से अनुरोध करती हूँ कि वे कुछ शब्द कहें। बहुत बहुत धन्यवाद श्रेया। एक बार सरस्वती माता को नमन करते हुए दोनों आयोजक संस्थान अदिति महाविद्यालय, एकता सोसाइटी और विश्व केंद्र के तमाम साथियों को हम सादर सादर नमस्कार करते हैं। और जो हमारी प्रिंसिपल मैम है ममता शर्मा जी के, उनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं हम अपने सभी BSW फैकल्टीज को, खासकर बीना मैम की अगुवाई में, चाहे वो सीमा मैम हो, सुनीता मैम हो, मंजू मैम हो, राकेश सर हो, सभी लोग बढ़ चढ़कर इसमें भागीदारी लेते हैं और इस भागीदारी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसके जो कोऑर्डिनेटर हैं, पर्टिकुलरली राकेश जी और अपूर्वा गौतम जी और कनिका जी, इन तीनों को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत कांग्रेचुलेट करता हूं कि आपने इस तरह का सुंदर आयोजन किया। एक बार मैं पूरे अपने सदस्य, विश्व केंद्र के टीम के सारे सदस्यों को और अदिति महाविद्यालय को और एकता सोसाइटी को धन्यवाद देता हूं कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दिया कि 2 शब्द में रख सकूं। मेरा सबसे ज्यादा नमन सभी पार्टिसिपेंट्स को है, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो NGO के हमारे साथी हों, चाहे किसी भी जगह से इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हों, लेकिन पार्टिसिपेंट्स आर द क्राउन ऑफ द एनी इवेंट, एनी सेलिब्रेशन और एनी इवेंट और एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो सबसे पहले मैं आप सभी को नमन करता हूं, जितने हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं। बहुत बहुत आभार कि इस कार्यक्रम को आपने अपना समझा। आज का कार्यक्रम स्टूडेंट्स के लिए है, वो इसको ज्यादा बढ़ चढ़कर भागीदारी देंगे, वही अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन मैं अपनी बात को इस तरह से थोड़ा समअप करना चाहूंगा कि सबसे बड़ा यदि जीवन का कोई लर्निंग होता है तो एक्सपीरियंस शेयरिंग और एक्सपोजर होता है। एक्सपीरियंस शेयरिंग में हमने कहाँ गलतियां किया, कहाँ हमने अच्छी बात की, अच्छी अगर कोई चीज रही, उस मॉडल को हम कैसे रेप्लिकेट कर सकते हैं, कैसे न केवल रेप्लिकेबल हो बल्कि उसको स्केलेबल कर सकते हैं। तो एक बात तो ये सीखने को मिलती है। और यदि किसी प्रोजेक्ट में या किसी कार्यशैली में कमी आई है तो उससे कैसे हम लेसन लेते हुए आगे और अच्छा कर सके। तो इस लिहाज से आज का जो कार्यक्रम है NGO मीट, ये सबसे बड़ा महत्व इस बात को रखता है कि आज हम ग्रूमिंग बर्ड्स जो हैं, हमारे जो टैलेंट हैं, उनके साथ बैठकर और जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं, वो दोनों लोग हम लोग मिलकर आज कुछ बातचीत करने वाले हैं और इससे हम लोग समझने वाले हैं। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा इस समय कि पीढ़ी के बीच गैप आनी लाजमी है, क्योंकि वो कंटेक्स्ट होता है, वो समय होता है। जो हमारे गुरुजन ने जो सीखे थे वो हमें सिखाए, आज जो हम लोग सीख रहे हैं वो हम अपने आने वाले पीढ़ी को सिखाने का प्रयास करते हैं। और यही सबसे जीवन की ब्यूटी है कि जो व्यक्ति या जो संस्थान एडेप्टेबिलिटी अपना लिया, वो संस्थान जिसने फ्लेक्सिबिलिटी अपना लिया, एडेप्टेबिलिटी अपना लिया, वो सतत निरंतर आगे बढ़ते चला जाता है। तो हम व्यक्ति हों या संस्थान हों, हमारे में फ्लेक्सिबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि हम कंटेक्स्ट के अनुसार यदि हम वर्क करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। तो एक तो मैं अपने जो सभी हमारे भाई बहन जो ग्रूमिंग बर्ड्स हैं उनको मैं केवल बताना चाहता हूं, बाकी तो गुरुजन के सामने बोल पाना आसान नहीं
और सभी गुरुजन जो हैं हमसे श्रेष्ठ हैं, ज्ञान में गुण में सभी ज्ञानी हैं, गुणी हैं, उनके सामने मैं कोई ऐसी बातें नहीं रखना चाह रहा हूं। तो मेरी बातों को जितने भी लोग हैं जो सीनियर मोस्ट हैं वो कृपया इस बात को ये ना समझें कि कोई उपदेशात्मक बात हो रही है। मैं अपने भाई बहन से अपील करना चाहता हूँ, बीइंग एल्डर ये हमारा फर्ज बनता है कि हम अपील करें। तो ये अपील के तौर पर मैं एक ही बात, 2-3 बातें रखना चाह रहा हूं कि एक तो जब भी आप कहीं बढ़ें, कहीं जाएं, जब आपको काम करने की अपॉर्चुनिटी मिले तो फ्लेक्सिबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी जरूर रखें, क्योंकि ये जो ग्लोबल वर्ल्ड है, नाउ ग्लोबल विलेज की हम बात कर रहे हैं। हर एक तरह के कास्ट हैं, हर एक तरह के रिलीजन हैं, हर एक तरह की सोसाइटी है, हर एक तरह के ज्योग्राफिकल कंडीशन है। जो हिमाचल प्रदेश में अच्छा हो सकता है वो राजस्थान के बाड़मेर में शायद वो प्रोजेक्ट अच्छा से नहीं चल सकता। जो जम्मू कश्मीर में जो प्रोजेक्ट अच्छा से चल सकता है वो हो सकता है कि गैबन में अच्छा, दक्षिण अफ्रीका में अच्छे से नहीं चल सकता। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कंटेक्स्ट क्या है, व्यक्ति की जरूरत क्या है, और अगर किसी प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी विशेषता है तो नीड असेसमेंट हम भूल जाते हैं, और आजकल तो बहुत भूलने लगे हैं। तो हमें नीड असेसमेंट से लेकर इम्पैक्ट असेसमेंट तक की जब हम बात करेंगे तो उसमें सारे चिन्हित चीजें आएगी, और उसका स्ट्रेटेजिकली हमें इंटरवेंशन करना चाहिए, मिड टर्म इवेल्युएशन करना चाहिए, और अपने आप को ये समझना चाहिए कि हम इस कार्यक्रम को क्यों कर रहे हैं और इससे बेनिफिट अल्टीमेटली किसका है। एक तो मैं ये बताना चाहता था कि एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इज द की। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था कि हम फिलैंथ्रोपी मोड से डेवलपमेंट मोड की तरफ बढ़ रहे हैं। ये आसान नहीं होता है। जब हम चैरिटी वर्क कर लेते हैं तो सस्टेनेबिलिटी आसान नहीं होता। इसके बीच कैसे सामंजस्य बैठाएं, ये हमारे प्रोफेशनल का कार्यशैली होनी चाहिए, जिससे कि हम आने वाले समय में सोसाइटी का सुधार कर सकें और उसमें कुछ अपनी योगदान दे सकें। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी यदि मूलभूत चीजें होगी तो वो होगी ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी केवल कार्यशैली की नहीं बल्कि व्यक्तित्व की भी होनी चाहिए, बात विचार की भी होनी चाहिए, समर्पण भावना की भी होनी चाहिए। यदि हम इस चीजों से दूर रहेंगे तो कम्युनिटी हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो हमें ये चीज देखना पड़ेगा कि जहां हम प्रोजेक्ट इंटरवेंशन करने जा रहे हैं, क्या हम उनके लायक फिट बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं। तो ये चीजें हम थोड़ा सा समझाना चाह रहे थे अपने साथियों से। जब मौका लगेगा तो हम फिजिकली इन चीजों की बात करेंगे, चर्चा करेंगे। समय कंस्टेंट को देखते हुए हम केवल इतना आप लोगों से अपील करेंगे, हमारे सभी भाई बहन हैं, ये बहुत ही आपने जो BSW चुना है फील्ड, या जो डेवलपमेंट का फील्ड चुना है, ये आपने यूं ही नहीं चुन लिया। ये भगवान ने किसी मुहूर्त में आपको जन्म दिए और तब जाकर आप इस फील्ड को चुन पाए हैं, अन्यथा सभी के बस की बात नहीं है। आप जब पेपर पढ़ेंगे, अनिल अग्रवाल जी इतने दिन जब बिजनेस किए तब वो फिलैंथ्रोपी की तरफ बढ़े कि हमें डेवलपमेंट करना चाहिए। बिल गेट्स जब इतना किए तब उन्होंने एक मिलिंडा गेट्स और बिल गेट्स फाउंडेशन बनाए। बड़े बड़े चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन या बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं वो बिल्कुल जीवन के अंतिम पड़ाव पर सोचते हैं कि हमें जीवन में जरूर ये सदाचार करना चाहिए और कम्युनिटी को कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। बट वी आर लकी पीपल, वी आर फॉर्चुनेट पीपल, वी आर ब्लेस्ड, वी आर मैसेंजर ऑफ द गॉड। और हमें इस तरह के मैसेज कन्वे करना चाहिए कि मैसेज हम नहीं कन्वे कर रहे हैं, ईश्वरीय शक्ति मैसेज कन्वे कर रहे हैं। और ईश्वरीय शक्ति ने हमें इस लायक बनाया कि हम सोशल डेवलपमेंट के लिए जुड़ रहे हैं। एंड वंस अ सोशल वर्कर ऑलवेज अ सोशल वर्कर। उनके जीन में होनी चाहिए, उनके DNA में होनी चाहिए। ये आपके पीढ़ी में समा जाएगा, आने वाले पीढ़ी में समा जाएगा। ये बात आज बहुत आसान लग रहा होगा, बहुत सिंपल लग रहा होगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि आज क्यों हम टाटा ग्रुप की सबसे ज्यादा नाम लेते हैं, हम बजाज ग्रुप की क्यों ज्यादा नाम लेते हैं, हम बिरला ग्रुप की क्यों नाम लेते हैं, डालमिया ग्रुप की क्यों नाम लेते हैं। क्योंकि इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज तक एक अपना ध्येय बनाए हुए हैं कि कम्युनिटी इज आवर स्ट्रेंथ। यही मैं आप सभी से अपील करना चाहूंगा कि आप एक्सीडेंटल इस फील्ड में नहीं आए हैं, आप ईश्वर के प्रदत्त गुण के आधार पर आए हैं। ईश्वर की महिमा थी, ईश्वर ने आपको इस लायक समझा कि हमें दिया। हर किसी को मंदिर में पूजा करने के लिए नहीं बैठाया जाता है, हर किसी को गिरजाघर में, चर्च में नहीं बैठाया जा सकता, हर किसी को मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, मतलब उस मस्जिद का संचालन के लिए नहीं किया जाता। इसीलिए हर किसी को कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का चार्ज ईश्वर नहीं दे सकते। जिसमें कहीं ना कहीं वो गुण देखे हैं या जिसको वो अपना मैसेंजर बनाकर भेजना चाहते हैं, उसी को उन्होंने भेजा है। हमें ये वरदान समझकर स्वीकार करना चाहिए, इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझना चाहिए, इसे ड्यूटी नहीं समझना चाहिए, बल्कि यही हमारा
गीता है, यही हमारा कुरान है, यही हमारा बाइबल है। मैं अपने भाई बहनों से अपील करना चाहता हूं, जहां कहीं भी जाएं वही आपकी सोसाइटी है। आप अगर अपना दायरा केवल एक परिवार तक रखेंगे तो वो केवल एक परिवार तक सीमित कर रह जाएंगे। जब एक छोटे गांव तक रखेंगे तो केवल गांव तक सीमित होकर रह जाएंगे। जब आप ब्लॉक लेवल जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल जाएंगे, कंट्री लेवल तक जाएंगे, क्यों गांधी जी को वर्ल्ड सिटीजनशिप का खिताब दिया जाता है, क्यों हम एक गांव में भी हमें लोग नहीं जान पाते हैं। ये एक एक्सपोजर का है, दायरा का है, एक इंटेंसिटी का है, हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। वसुधैव कुटुंबकम हम बोलते हैं और हमें उसमें जीना चाहिए। मैं आप सभी को एक बार पुनः नमन करता हूं कि आपने 2 शब्द रखने का मौका दिया। सभी साथियों से आग्रह करता हूं कि इस बात को जरूर आप अपने दिल में तस्दीक देंगे, दिल में जगह देंगे, और आशा करता हूं कि यदि कोई बातें अच्छी नहीं लगी हो तो बर्डन न लें प्लीज। हल्का रहना है, इंजॉयफुल रहना है, जीवन को स्माइली बनाना है, आगे बढ़ना है। जितना हमारे में हल्कापन रहेगा उतनी हम ऊंचा उड़ान ले सकेंगे। कोई अनावश्यक बातें अगर रखी गई हो उसको कृपया दूसरे काम से निकाल देंगे। जरा सा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, जरा सा लोड लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कुछ अच्छी लगी हो उसको जरूर से जरूर आप इसको सीखें, समझें और आप पैगंबर बने। यू आर मैसेंजर ऑफ द गॉड। आप पैगंबर हैं, आप मसीहा हैं। कब आप छोटे छोटे एक्टिविटी करते करते साधारण कार्य से असाधारण कार्य में तब्दील हो जाएंगे। कोई नहीं जानता था कि मदर टेरेसा उतनी बड़ी मदर टेरेसा हो जाएंगी। उन्होंने एक शुरुआत की होगी और उन्होंने आज उस मुकाम को दिया कि पूरा दुनिया मदर टेरेसा को जानता है। पूरा दुनिया सभी लोगों स्वामी विवेकानंद जी को जानते हैं। पूरा दुनिया सब लोगों को जानते हैं। तो मैं कहना सिर्फ इतना चाह रहा हूं, आप छोटी छोटी एक्टिविटी करते चले, सत्य निष्ठा से बढ़ते चले जाएं, अपना को समर्पित भावना से लगाते चले जाएं। कब आप साधारण से असाधारण हो जाएंगे। When you will be ordinary to extraordinary, God knows we don't know. But our blessing is always with you. May God bless you and fulfill all your dreams and desires. Go ahead, go ahead, go ahead. Keep going, keep going, keep going. Keep learning, keep learning, keep learning. Learning, unlearning and relearning is the success mantra. If you will adopt it, no will ever will be stop you. You will be not only ordinary, you have born as an ordinary person, but you will become as an extraordinary person. Everything in your fate, everything in your hand. World is yours, stage is yours. May God bless you. आज जितने स्पीकर इसके बाद हमारे साथ आने वाले हैं उन सभी को समय की बचत करते हुए मैं सभी को इस्तकबाल करता हूं, नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि आपने हमारे अदिति महाविद्यालय, एकता सोसाइटी और विश्व केंद्र का आपने मान रखा, सम्मान रखा, हमें प्यार दिया, स्नेह दिया कि आप इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं। मेरे तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सभी आने वाले स्पीकर को। और जितने स्पीकर अच्छी अच्छी बातें बोल कर गए उनको तहे तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूं। और आप सबों को एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय जगत। Thank you so much, sir, for your kind words. Now, I would like to hand over the forum to Ms. Apurva Gupta, Program Officer VYK, to introduce the theme of the panel discussion. Thank you so much, Shreya, for giving me this opportunity. And I would love to do the whole coordination, being an alumni of Aditi Mahavidyalaya and being a program officer of Vishwa Kendra. So first of all, I would like to welcome all our panelists and our moderator, Dr. Manju Goyal ma'am. I would request my team member to kindly share the PPT of her bio. Yeah. Dr. Manju Goyal is an assistant professor in the Department of Social Work, Aditi Mahavidyalaya, University of Delhi. She is MPhil PhD in Social Work from Department of Social Work, University of Delhi. And she has a huge experience, 14 years of work experience in the field of teaching and supervision of social work students. She has authored many books, comic chapters in edited books, research articles in journals of repute, articles in newspapers.
She was also associated with the Global Fund Project as a certified master trainer in HIV/AIDS counseling, and she's a lifetime member of National Association of Professional Social Workers in India. Dr. Goel is an elected NEC member of Alumni Association of Indore School of Social Work. We would like to welcome you, ma'am, as our moderator for today's panel discussion. Thank you so much for accepting this role, and hope this moderation would execute in successful manner. Welcome you, ma'am. Next, to welcome our panelist for today's discussion, we would like to welcome wholeheartedly Dr. Renuka Valoda, ma'am, who is actually working, like she's a very younger most doctor as a MD pediatrics, and currently working as senior resident of pediatrics in Lady Hardinge Medical College. Dr. Renuka did an extensive descriptive cohort study on neurological complications in patients with lymphoreticular malignancy. During COVID-19, she dealt with the several cases of multi-systems inflammatory syndrome in children. Her area of interest is in handling complicated neonatal cases, compassionate to treat diseases in children. We are thankful to you, Dr. Renuka, ma'am, for accepting our invitation for being a panelist for today's event. Thank you so much for accepting our invitation. As we proceed further, I would like to welcome, on behalf of whole coordination team, Ms. Ritu Sharma, who did her graduation in social work from Aditi Mahavidyalaya, University of Delhi, and Masters in Social Work from Kurukshetra University, Haryana. She has a rich working experience of more than 1 decade in the field of HIV. Her area of expertise is in program management, implementation, capacity building, and strengthening HIV services at a larger scale. Currently, she is working as a program officer in Alliance India, and earlier she has been associated with government and non-government organizations. She has been working with one of the most important people living with HIV group of pregnant women and exposed children. She is a nodal officer for EMTCT, that is elimination from mother to child transmission of HIV in Delhi. I am eager to listen you, ma'am, because you are from the field. You have rich experience from the field, and hope to have a successful discussion and worthful discussion with you, ma'am. We would like to welcome you for the panel discussion. Furthermore, I would like to welcome Ms. Shaheen Parveenji, who has a diverse work experience with various organizations. To name a few organizations, like Ankush Working Children Social Services as an office assistant, Adarsh Public School as a primary teacher, Indian Rare Shield and Resorts Limited as an accountant, Indian Market Research Bureau, HDM Public School as a teacher, as an Anganwadi worker too. Ms. Shaheen is presently working as a professional counselor in Crime Against Women Cell and dealing with the cases of domestic violence and dowry. Apart from professional front, she is a poet and has authored 2 books named Ankahe Shabd and Ae Zindagi Hamesha Dil Se. I would like to welcome Shaheen ji. I hope आपके experiences से हम आज एक बहुत ही अच्छा एक डिस्कशन कर पाए और अंदाजा लगा पाए कि कैसे ग्राउंड रियलिटी को फेस करते हुए आपने अपना एक कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में दिया। तो इसके साथ ही मैं थीम पे तो इंट्रोडक्शन बहुत हुआ ही है अभी तक फिलहाल। मेरे टीचर्स ने, मेरे जो मेंटर्स हैं, उन सभी ने बात रखी है कि बीइंग अ वुमेन क्यों जरूरी है एक महिला का सशक्तिकरण। और जब कोविड-19 जैसा पेंडेमिक हम लोगों को हर रूप में कुछ ना कुछ सिखा रहा है आज भी, तो सशक्तिकरण अपने आप में
एक महिला का सशक्त होना बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एक फैक्ट है और एक बहुत ही जरूरी एक मुद्दा है जिस पर हम कभी भी आंख बंद नहीं कर सकते, अपने कान बंद नहीं कर सकते या हम अपनी आवाज को रोक नहीं सकते। और इसी के साथ साथ मैं बस एक ही फैक्ट को जोड़कर अपनी राय रखना चाहूंगी कि इस थीम को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी कि आज इस पेंडेमिक ने हमें सिखाया कि किस तरह हमें जेंडर न्यूट्रल होना जरूरी है, कि एक जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी की क्यों आवश्यकता है। क्योंकि अगर आई एम श्योर हम सभी यहाँ पे वर्किंग भी हैं और होम मेकर भी हैं और महिला हैं साथ साथ, तो हमें समझ में आ रहा है कि हम अगर फोर फ्रंट पे आज बैठे हुए हैं तो हमारे प्रोफेशनल फ्रंट पे और हमारे पर्सनल फ्रंट पे हमें कितना सपोर्ट मिला है। दैट्स बिकॉज वी समवेयर बिलोंग टू अ जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी। ठीक है, लड़ रहे हैं, चीजें क्लियर हो रही हैं, क्या मतलब है जेंडर न्यूट्रल होने का वो समझ में आ रहा है और आगे भी हमें समझाना है, क्लियर करना है। अगर मैं अपना ही एक एग्जांपल शेयर करूं तो सेकेंड वेव ने आई थिंक सबको ही, किसी को भी नहीं छोड़ा अछूता, अपने चपेट में लेकर रखा ही है। तो उस समय तो हम सोच भी नहीं पा रहे थे कि जहाँ एक फैमिली में सभी लोग, बुजुर्ग से लेकर जवान से लेकर बच्चे तक भी कोविड अफेक्टेड थे, तो किस तरह से एकजुट होकर, वहां कहीं पुरुष नहीं कहीं महिला नहीं, सभी ने एक साथ होकर एक फैमिली को, अपनी फैमिली को संभाला। और साथ साथ प्रोफेशनली जो हमें सपोर्ट मिला वो उसका तो हम बयान ही नहीं कर सकते कि वी आर फॉर्चुनेट इनफ टू बी एसोसिएटेड विद सच ऑर्गेनाइजेशंस एट प्रोफेशनल फ्रंट। बट हाँ, हमारे उसी के साथ साथ हमारे पास वो भी एग्जांपल्स हैं जो फ्रंटलाइन वर्कर्स, जो विमेन वॉरियर्स की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने अपना योगदान दिया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी होना एक सशक्त महिला के लिए वो उसको हेल्प करेगा आई गेस। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम चाहूंगी और डॉक्टर मंजू गोयल मैम को इनवाइट करती हूँ कि आगे का मॉडरेशन वो संभालें और एक अच्छा डिस्कशन हमें मिल पाए। Good morning, everyone. Thank you, Apurva, but I'll give you the stage again. Principal ma'am has joined us. We welcome Principal ma'am in this program. Out of her busy schedule, she is now managed to join us. Welcome you, ma'am. हमको अपनी Hello, Dr. Manju. बेखौफ चलना आता है। I'm in the PM rally. I'll just conclude my speech in a minute. Yes. So that you can continue. फायरिंग के Am I audible? पर चढ़ना आता है। Yes, ma'am, you are audible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good morning, everyone. It's my immense pleasure to welcome you all to the NGO meet jointly organized by the Department of Social Work and Vishwa Shiva Kendra. I take this pride to welcome our guest speakers for the day in the panel discussion. Dr. Ruchi Sinha, Associate Professor, TIS Mumbai, Dr. Renuka, MD Pediatrics, Lady Harding Medical College, Ms. Ritu Sharma, Program Officer, Alliance Group, Ms. Shaheen Praveen, Professional Marriage Counselor. Ma'am, you are on mute mode. Ma'am, please unmute yourself. Yeah. Okay. Good morning, everyone. It's my immense pleasure to welcome you all to the NGO meet. The guest speakers of the day for the panel discussion, Dr. Ruchi Sinha, Dr. Renuka, Dr. Ritu Sharma, and Ms. Shaheen Praveen. I'm specially pleased to welcome Mr. Uday Shankarji, Chief Controller, Vishwa Kendra, who has been very active and he has been actively associated with this initiative. And without his cooperation, support and guidance, this event would not have been possible. I just want to extend a warm welcome to the representatives of various esteemed organizations working for the upliftment of different sections of society. As we can see that the theme of today's program is Sashaktikaran, Women Warriors during COVID-19. This theme is very inspiring based on the daily experiences, how each and every woman is facing and dealing with the challenges during the pandemic situation.
Each and every woman has to do all the work, even in lockdown. Doctors, nurses, teachers, housewives, every woman in every profession. He has done his master's For and cooking PhD in from Zoom University meetings, of for Minnesota, monthly cycles, USA. and Dr. balancing Ajay Kumar stress has also herself. served in the Ministry Every of female is a Communication and warrior. Information Technology So once at again, I Director welcome General all the National dignitaries, Information participants, Center. He has also faculty held the members, appointment and of students. Thank you Additional so much. Secretary in Department of Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. So here we begin with our panel discussion with your due permission, ma'am. Thank you so much for joining us. Good morning, dear participants and our esteemed panelists. I, Dr. Manju Goyal, is the moderator of this session, and I welcome all our esteemed panelists who have joined us today and who actually take out time from their busy schedules. The theme of this session is very appropriate in contemporary scenario. Sashaktikaran, women warriors in COVID-19. Even in 2021, International Women's Day, UN has themed women in leadership, achieving an equal future in COVID-19 world. Women empowerment is for the women of all segments of the society. When I see a little girl or a woman driving, I feel this is empowerment. Empowerment सिर्फ एक वुमेन की चॉइस को रिस्पेक्ट करना है, उसे चूज करने की फ्रीडम देना है. अक्सर डे टू डे रूटीन में हम उसी चॉइस को एंजॉय नहीं करते हैं और ना करने देते हैं. Women empowerment is a prerequisite for sustainable development. अगर हमें समाज को सस्टेनेबली डेवलप करना है तो women empowerment होना बहुत जरूरी है. When I entered to the social work profession, I used to listen that investing in girls' education means investing in the education of the whole society, family and the whole society. एक लड़की पढ़ लिख जाएगी तो पूरा परिवार पढ़ जाएगा और पूरी समाज पढ़ जाएगा. ये मैंने सुना, मेरे टीचर्स से सुना. आज डॉक्टर नलिनी ने हमें ज्वाइन भी किया था. उन्होंने हमेशा ये चीज हमको सिखाई कि कम्युनिटी में इस विषय पर हमेशा ध्यान दें कि विमेन का एम्पावरमेंट होना बहुत जरूरी है. शी इज अ चेंज एजेंट. माय ब्रदर यूज्ड टू से कि बेटी के होने का दुख नहीं होता है अगर शादी के बाद उसे परिवार अच्छा मिल जाए. बट ऑन दिस माय फादर यूज्ड टू से परिवार तो सब अच्छे ही होते हैं, बेटी को इतना लायक बनाओ कि वो हर मुश्किल का समाधान कर पाए और उस परिवार को अच्छे से अपने साथ लेकर चल पाए. I still remember once one of my aunts said कि बेटियों को तो कुकिंग शुकिंग सिखाना ही चाहिए. My father answered कि जब जरूरत पड़ती है तो बेटी हो या बेटा हो दोनों पर खाना बनाना सीख जाते हैं. I always respected my father for his vision of women empowerment. Empowerment doesn't mean कि women का वर्किंग होना ही जरूरी है. Empowerment का मतलब होम मेकर का भी एम्पावरमेंट होना जरूरी है. एक औरत एम्पावर्ड है, उसको एम्पावर्ड किया जा सकता है जो नहीं है. जरूरत है कि उसे बोलने की आजादी हो, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने की आजादी हो. मैं एज अ वुमेन सिर्फ घर संभालने के अलावा भी स्किल सीख सकती हूँ, पर मुझे वो लिबर्टी तो दो. हर बात पर मुझ पर ना चीखो चिल्लाओ, कोई काम ठीक से ना हो तो मुझे पागल कहकर ना बुलाओ. मुझे मौका तो दो, मैं सब सीख लूंगी और अच्छे से संभाल भी लूंगी. मुझे वो आजादी तो दो. In this COVID-19 pandemic, I look at women in central role and I feel a sense of pride. In the front line as doctors, nurses, counselors and social workers. In essential jobs, supporting everyday needs. We have seen large number of women supported the whole world by making the masks, as well as in care and domestic work, at home, at other fronts for the well-being of the family and the society.
Women's were there for the psychosocial support to the whole family, whether it is the husband with no job or less earning or no earnings, children in online education mode, ensuring entertainment to the children because there was no outside play. So she was working day and nights, and this is not enough. We have seen many cases where the women lost their life partners, children, biggest emotional trauma, but still managed and coped with all the stressors and stood as a role model for the family. She is the warrior. Dear friends, with this, I invite our esteemed panelist, our esteemed and reputed doctor, Dr. Renuka Baloda. She's a MD Pediatrics, Lady Harding Medical College. Good morning, Dr. Renuka. Hi, everyone. How are you, ma'am? I'm fine. First of all, a great thanks to you all for inviting me and for giving me the opportunity to share my feelings with you. It is our pleasure, ma'am. Thank you so much for giving the consent to be a panelist here. Ma'am, I would like to ask you that there was the time when first wave were there. We were feared. We were struggling to protect ourselves from the coronavirus. और फिर सेकेंड वेव आया जहां हम और भी ज्यादा डर गए थे, बहुत इमोशनल ट्रॉमा था, एक टर्मोइल का फेज था. थर्ड वेव जो अभी चल रहा है, एज अ डॉक्टर आपके क्या चैलेंजेस थे, राइट फ्रॉम वेयरिंग अ पीपीटी किट और टेकिंग अदर प्रिकॉशंस टू टेक केयर ऑफ सेल्फ एंड द पेशेंट्स? It has been many months since this coronavirus has created a havoc on this globe. And as a doctor, during all the three waves, my experience has been extremely different. Like during the first wave, we all were very much scared. During the first wave, because it was the pandemic, we didn't know what is our management plan, how to deal with these patients. So that was the biggest challenge to us. And obviously wearing a PPT has remained a big challenge. Like we used to wear PPT for 6 to 12 hours. But wearing a PPT even for 2 to 3 hours is extremely a difficult task. So that was the big challenge. Then during the second wave, because of our past experiences, we knew what is the treatment, how to deal with these patients. But we faced two challenges basically. The first was we had lack of resources because so many patients were affected. So we had lack of oxygen, we have lack of ventilators. And I think for each one of us, it was the worst wave. Each like in my family also, all the members were affected, many of the residents were affected, and we have seen many deaths in our hospital during that wave. So during that wave, yes, humanitarian crisis also. And then during the third wave, I think we got acclimatized, we knew what to do. But during the third wave, the cases were mildly symptomatic only, all were recovered well. So the challenges has been different during all the three waves. Yeah, exactly. In fact, second wave, I remember hardly कोई family होगी जहाँ हमने tragedies नहीं देखा. It was really pathetic. Ma'am, because you have been working in pediatric department from a long time, इस बीच हमने कोविड से रिलेटेड सुना कि मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम MIS करके जो है बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे थे, उनका मल्टी ऑर्गन सिस्टम कहीं ना कहीं परेशान कर रहा था, जो पोस्ट कोविड इफेक्ट जनरली कहा गया. आपका कोई एक्सपीरियंस इस तरह का रहा जहां पेरेंट्स का इमोशनल आउटबर्स्ट रहा हो एंड यू हैव डेल्ट विद इट? किस तरह के एक्सपीरियंसेस रहे इस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर? Actually, multi-system inflammatory syndrome is a post-COVID effect. Like after recovering from COVID, it occurs in children from 1 to 19 years of age, including adolescents. And what happens in this, the patient presents with fever of more than equal to 3 days, and any of the two signs like rashes all over the body, redness of the eyes, then heart involvement, bleeding, falling blood pressure, and gastrointestinal symptoms like vomiting and diarrhea. So we have a treatment of this disease also, but this disease is actually very much fatal in children. If it is diagnosed early, then it can be treated appropriately. We have treatment options which include immunoglobulins and steroids like methylprednisolone. But if the treatment is delayed, then it is fatal in children.
So during our COVID duties, we have seen many patients who were diagnosed with the syndrome, MIS-C, and in my hospital, we have faced actually verbal violence. But in other hospitals like LNJP, who were dedicated COVID hospitals, their doctors have faced physical violence too after the mortality of the patients. It's extremely difficult to counsel them, to satisfy them. So we have. I know, I mean, there must be tragedies also, because there were no awareness on it, like, how to deal with it. जब तक parents को समझ आ रहा था MIS suffering है, तब तक तो काफी बच्चे का हालत खराब हो जाता था. I have seen many parents to be in a very emotional trauma, और उनको counseling उस वक्त पर देना भी एक biggest challenge था. I'm sure. In fact, in many of the cases, बहुत death भी हुए इस बीच बच्चों के because of MIS. So COVID के post effect भी बहुत बुरे रहे हैं, which I came to know through the reports and through some of my personal experiences. Dr. Renuka, I mean, do you face any of the dilemma which you would like to share with us, as a woman, as an individual, as a family person, and also being a doctor, which you would like to share with us? Any of the experience related to COVID-19? I think being a family person, the biggest dilemma was like after doing COVID duty, whether to go home or not. There's always been a dilemma in all the three waves. And in the first wave, I didn't went home. Then in the second wave, I went home only for 2 to 3 days. Now in the third wave also, I'm at hostel only. So that has been a biggest challenge and biggest dilemma in my life of infecting my parents, grandparents. Because as young doctors, we can deal with it very well. But our parents and grandparents, they have some comorbidities also. So this disease is fatal in adults actually. Then I think the second dilemma is related to the ethical issues. Like people have a fear of when being diagnosed with COVID infection. Like they will have symptoms, but they will not consult the physician because they have a fear. Like if they will be diagnosed with this infection, then they will be shunned out by their neighbors. They will have finger pointing and blame, etc. So I think that social dilemma is also there. Right, and I know that it was difficult for you also, as a doctor, because if we are not able to meet our family members, and with so much of emotional turmoil going on with us, I know, because every day you are watching the patients in crisis situation, you are seeing the death cases also, और उस बीच अगर एक psychosocial support भी ना मिले फैमिली से तो बहुत ही मुश्किल होता है. मुझे याद है इवन वी द मैरिड वुमेन्स, हम लोग 1 साल तक अपने घर नहीं गए थे. वी डिडंट मीट एनी ऑफ आवर फैमिली मेंबर्स जस्ट टू अवॉइड कि क्योंकि आई आल्सो बिलोंग टू families of doctors, so all my brothers and my niece and all, they all are from the same field, and they said please हमारे घर मत आना क्योंकि हम तो already exposed है, आप ना कोई exposed हो जाओ. So it was a difficult phase. I could totally understand Dr. Renuka कि आपके लिए कितना मुश्किल रहा होगा उस phase को overcome करना. डॉक्टर रेणुका, हमने और भी एक चीज जो है अक्सर रिपोर्ट्स में देखा कि जो डॉक्टर्स हैं उनके अगेंस्ट बहुत वायलेंस हो रहा था. पेशेंट्स अगर ठीक से ट्रीट नहीं हो पा रहे थे, एंड इफ इट वुड हैव रिजल्टेड इन डेथ, तो वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, किस तरह से इसे डील किया जा सकता है? Actually, the reason of violence was being that parents used to say that they came with just a short history of 2 to 3 days vomiting and abdominal pain. So they have a denial. They were not able to accept the diagnosis that their kid is COVID positive. So that was the main reason when we have seen that attendants and parents fighting with us regarding the diagnosis. Then secondly, once the kid is diagnosed with COVID positive, then that is isolated and quarantined in our COVID wards. So there are other investigations like CT scans, MRI, if they are planned for any surgeries, then that is being delayed. So the parents used to fight with us regarding that also. So during my COVID duties, we had actually verbal fight regarding this. But in other hospitals like LNJP, RML, etc., I have heard from my colleagues that they have a physical violence too. So that has remained a big task for us, a big challenge for us to counsel them, to satisfy them that yes, their child is infected.
In fact, I request all my participants to, look at this problem also, because, being doctors, when they are treating the illness cases, is they are doing their level best. In fact, हम सब जानते हैं इस COVID-19 के टाइम पर हमारे लिए अगर कोई भगवान का रूप था तो वो डॉक्टर्स थे, और इस बीच में उन्हीं के साथ वायलेंस होना बिल्कुल ठीक नहीं था, रीजंस चाहे कुछ भी रहे हो। तो एज सोशल वर्कर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम एक मास लेवल पर अवेयरनेस जरूर क्रिएट करें कि हम डॉक्टर्स जितना बेस्ट कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और जो उनके हाथ में भी नहीं है उसके लिए वो भी हेल्पलेस है। इवन आई नो कि इवन डॉक्टर्स के लिए भी ये बहुत दुखद होता है जब उनका कोई पेशेंट उनके साथ नहीं रहता है। Thank you so much, Dr. Renuka, and I request you to stay connected with us, because I'm sure हमारे participants की कुछ queries होंगे at the end. So please stay connected with us. Thank you so much. Thank you. Thank you. With this, I request Ms. Apurva, as Dr. Ruchi Sinha is with us. I request you, Apurva, please उनका welcome अगर करें तो. Thank you so much. Over to you. Thank you so much, Manju ma'am. I would request our team member to kindly share her bio, Dr. Ruchi Sinha's bio. Yes. We would like to welcome ma'am for such a event, for such a wonderful event and panel discussion on the said theme. Dr. Ruchi Sinha did her graduation in psychology from University of Delhi and did her MA in social work from Tata Institute of Social Sciences, Mumbai. She completed her MPhil and PhD in community health with a focus on violence from Jawaharlal Nehru University. Then she joined the TISS as faculty with the erstwhile Department of Criminology and Correctional Administration in 1996. With about 2 decades of experience in social work and criminal justice system, her work spans areas of violence, human rights, policing, crime and development, criminal justice policy, social work in criminal justice system, trafficking, child rights, child protection, and juvenile justice. She has been a visiting faculty at different international universities and member of numerous think tanks and an active advocate of criminal justice reforms. With that, we would like to welcome wholeheartedly to you, ma'am, and we are thankful to you for taking out your precious time from such a busy schedule of yours. Thank you so much, ma'am, for being our panelist today. Over to you, Manju, ma'am. Thank you, Ms. Apurva. Thank you so much. I welcome you, Dr. Ruchi. In fact, it is a glad moment for all of us to introduce here. Dr. Ruchi, I feel connected with you because I'm also an academician. So I know that this phase was not easy for all of us, especially for the teaching fraternity and especially for the social workers, because we are the people who are actually, work with the communities. और जब तक हम ग्रासरूट पर जाकर काम नहीं करते हैं तब तक हमको तसल्ली भी नहीं मिलता है, एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कहीं ना कहीं नहीं है। और शायद यही एक कारण था कि पीछे अभी कुछ 2 months पहले एक ऐसा फेज था जब हमारे स्टूडेंट्स ने कहा कि बस अब बहुत हो गया और हम लोग तो फील्ड वर्क करने के लिए जाएंगे ही जाएंगे, और हमारे 3rd years जो थे दे हैव गॉन टू द फील्ड आल्सो, बट अनफॉर्चुनेटली फिर ओमिक्रॉन आया और फिर उनका जो फील्ड वर्क जो कि फिजिकल मोड में चल रहा था वो हमको उनको वर्चुअल मोड में लेकर आना पड़ा। डॉक्टर रुचि, good morning, and I would like you to share your experiences with us as an academician, the challenges which you have faced, the difficulties, especially in the initial phase, and even nowadays also. Over to you, ma'am. Thank you, Apurva and Manju. And at the onset, I'm glad because Vishwa Yuva Kendra and Delhi University, and especially a college which has got social work, both are very close to my heart. So I'm glad to be a part of this. Thank you for getting me here. And hats off to Renuka and other doctors because they have really struggled very hard during this time. And coming back to social workers, yes, I think we are the invisible frontline workers.
because frontline में रहते हुए भी हम backdrop में ही रहते हैं, and we don't attempt to come to the focus because social worker का एक ही नारा रहता है, काम चलता रहे, लोग बचते रहे, और काम हमारा ऐसा रहे कि लोग enable होते रहे. So, with that Jasba, we have moved forward. And yes, the first wave was very, very challenging because, as you correctly pointed out, information nahi thi. And I think the only place where we social workers चूक कर गए कि वर्ल्ड ओवर जब ये चल रहा था, हम लोग वर्ल्ड का तो नजारा देख रहे थे, but we failed to build systems so that we could have responded it. Social workers could have built that system, which is a learning that I think we should take away from here. And once it hit, we started responding. So I think most social work departments and schools and centers, they started responding in terms of, लोगों के पास food नहीं था, they didn't have access to rations, or migrants का crisis had hit very closely. So responding to that, or people not getting access to hospitals for reasons other than COVID. So that whole closure of hospitals, getting doctors on board, telling them that, we are losing people to COVID, but we can't afford to lose people due to other reasons. So the responses were multifarious, and as a social worker, we were challenged. As an educator, as an academician, as a practitioner, as a policy person, so कभी समझ नहीं आ रहा था कि किधर मैं focus करूँ, what should I do? And invariably, you became a part of numerous groups. So like artist students had formed respond groups in different parts of the country. So suddenly you would get a call from Bengal, ma'am, so-and-so's father is stuck in Delhi. Please put us in touch with someone in Delhi. So I literally understood what a call center person feels, but slightly a call center in a crisis situation. So we hardly got to sleep. We were like putting people in touch with each other, resource management करने की कोशिश कर रहे थे. And then after almost 2 months of constantly responding, we said this is not the way to respond, because we were just doing crisis intervention, whereas what was required was putting systems in place. And that is the time when we got in touch with hospitals, doctors, even ministers, where they were responding with every stakeholder. And we said, we want a group, let's make a group, and wherever a question is posted and whoever is responsible, kindly respond. So from immediate response, which is the first wave of concern of a social worker, to building systems in place, we managed it at the end of the first wave. So second wave, we were better organized and better equipped. And Omicron was obviously a complete surprise, but not a surprise. And yes, we faced a lot of pressures from our students. We want to come back to the campus. We can't graduate without stepping into TSS. We don't want to be the batch who never came to TSS. And just when in January we were planning to open up, at that point of time, we had to issue a circular saying that we can't open up. So dealing with their stress of being a batch who will never come to TIS was another concern. So these are, functional systems and responses. Academically, as you correctly pointed out, fieldwork is such an important part of our education. And bina field pe jaye, fieldwork karna aur karwana was completely mind-boggling. And kahin na kahin we had this feeling ki, are we hoodwinking the system? Fieldwork ke naam pe kuch to ho raha hai, lekin is that enough? So, and some places where students were being able to go to the field, unke comparison with students who were not going to the field, feeling left out. So every day there was a new challenge. But the only learning is, as we say, the motto of social work is harna nahi hai. Respond karna hai, and to come up with something. So we did manage to come up with a situation where we said, okay, we will have 20-80 fieldwork. So 80% online where the situation is very bad. 20% if you don't have elderly in the house, if there are no comorbidities in the house, if you have access to good healthcare system, and if you feel convinced.
So ये modalities रखी, फिर उसके बाद one-to-one conversations with our students. And interestingly, what would happen is students are most comfortable talking to you after 10 o'clock in the night. And that boundary of professionalism, that you're not available, you know, that personal time that you had, wo to tha hi nahi. It's still not there today. So we are 24/7 available to students, and then students calling up and saying, "Ma'am, I'm going tomorrow, but I'm scared." So then, you know, talking to them and saying that, "Okay, why are you scared?" "Ma'am, I'll have to take the metro." So I'm like, "Okay, do you have any other options?" "Ma'am, it's too expensive." So I'm like, "Okay, as a social worker, what decision will you take to keep yourself safe or to meet the aspiration of going to the field?" So they're like, "Ma'am, we want to do both." So we're like, "Okay, let's do a need analysis. And then let's do a responsible choice." So amongst that talking through, which at times went up to almost 1.5 hours. So, you know, by 11:30, you're off the phone, and then you have your children coming, telling and saying, "Mama, I want to talk to you." And you're like, "I don't want to talk." So, you know, these are the challenges that we face. But the fact remains that the two things that we learned as social work educators, I'm sure your colleagues and you yourself must have faced, is that the trust that students have in you as an educator needs to be met with our actions. We cannot afford to be professional when our students are going through a difficult phase. So the fact that our students were being able to reach out to us and even fight with us, I'm not saying it was all very, you know, smooth running and all. They fought with us, they challenged us, they debated us. Kabhi kabhi gusse mein aake, "Ma'am, what the hell? You're not even understanding what you're saying." We've heard this also. But next morning we get a very sweet smiley with a message saying that, "Sorry, ma'am, I think we stepped up, crossed our boundaries." So I think in a nutshell, it was tumultuous, it was confusing, it was challenging, it was difficult. But when I look back, I think we navigated it. True. In fact, you know, if I look back, I still remember the students used to call any time, you know, they were going through, you know, deep psychosocial trauma, you know, when their parents are admitted or the grandparents are admitted, you know. बहुत ही ज्यादा एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन इवन हमारे लिए भी रहा, क्योंकि यू राइटली सेड, यू नो, रात को 11 बज रहे हैं या 12 बज रहे हैं ये तो पता ही नहीं चलता था. और यू नो समटाइम्स आई यूज्ड टू रियलाइज कि मैं 11 o'clock या 12 o'clock गूगल क्लासरूम पर पोस्ट कर रही होती थी कि कल मॉर्निंग में क्या होगा. And then suddenly I used to realize, oh God, what is I'm doing, you know, कैसे मतलब late night हम कर रहे हैं, is it a professionalism? बट फिर लगता था कि ये टाइम ये सोचने का है ही नहीं कि प्रोफेशनलिज्म है या नहीं है, बट वी हैव टू कंट्रीब्यूट. एंड मैम, यू राइटली सेड, यू नो, दिस वाज अ डिफिकल्ट फेज फॉर ऑल ऑफ अस, यू नो, क्योंकि हम अपने खुद के पर्सनल लाइफ से भी गुजर रहे थे, जहां हमारे फैमिलीज में भी बहुत सारे इश्यूज थे. हमारे कॉलीग्स जो हमें छोड़कर चले गए वो एक पेन भी रहा बहुत, यू नो, और एकेडमिकली भी हमें स्ट्रांगली खड़े होना था हमारे स्टूडेंट्स के साथ. हमको, यू नो, यू राइटली सेड कि वी आर द रोल मॉडल्स फॉर देम. उनको ये ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है कि यस, यू नो, इफ आई एम कॉलिंग माय ma'am has the solution for my problem, so she'll help me out in finding that solution. I'm sure, ma'am, you must be having some of the experiences like this. You know, you must be having certain personal encounters or certain, you know, being a woman. It will be, you know, really nice for us if you share those experiences with us, and how have you, you know, dealt with all those obstacles. Some very difficult experiences. Now, you know, when I look back, they're very amusing experiences. So, like I said, that I work with the police, you know, so the police was completely confused. Now, they were used to calling us up for, you know, juvenile justice related, women's related and all. So there was a case of a woman who was facing domestic violence. And this was in the first wave. So the police called up and said, "Ma'am, iska hum kya kare? We can't send her back to her home. She had a 6-month-old child with her.
we can't keep her in the police station. There is no government institution ready to take because of COVID protocols. उस समय RT-PCR नहीं हो पा रहा था easily. And if we send her back to her house, she will not be alive. What should we do? So at that time, everything was closed. And you are like, now what to do? And that woman is like, मैं कहीं नहीं जाऊंगी. I will park myself outside the police station, but I will not move. So, you know, talking to various government officials and they wanting to help. I won't say they didn't want to help, but they could not. So that was a new experience. You know, या तो government help देगी या नहीं देगी. पर यहाँ पे देना चाहती है और नहीं दे पा रही है, वो तो एक मतलब एकदम ही novel experience था. Then exploring, getting to talk to people that what is a safe custody, what is a safe place, how can we redefine it, and the police saying that ma'am हम कहीं पे भी नहीं छोड़ सकते, कल को कुछ हो गया तो हमारे ऊपर बात आएगी. So a very normal circumstance of health care and protection became a challenge, and just for one woman at that point of time. And then finally, the only place where we could get a safe place for her was a gurudwara. Because रहने की जगह मिली, खाने के लिए मिल गया, and the Panthis who are there, they said, आप फिक्र ना करो, ये हमारी बहन है. So then, you know, sending a write-up saying that this is a safe place identified in the given circumstances, getting it ratified by higher officers, वगैरह वगैरह वगैरह. But ultimately, after the woman was sent there, the responsibility of the police, despite the fact that they were going through so many challenges, every day they would say, ma'am, she's safe, ma'am, she's safe. So I'm like, I'm sure she's in a very safe place, but that does not mean we stop working. Now, उस समय court भी बंद था because it had been suspended. Now what to do? So then, you know, nudging the magistrate to say that, you know, help us, we need help, etc. But everybody went beyond their call of duty. So that was a challenge and yet a happy ending. The next experience was I lost my father in the first wave, and I went through I still go through tremendous guilt because I had shifted them from Delhi to Bombay, that I'll take care of you. 2019 is when they shifted. And the stress that he underwent looking at this, and he passed away and I couldn't get him medical help. So that guilt that I carry within myself, and then obviously doing everything as per, he wanted to donate his body, but in that time we couldn't donate his body. So I could not meet his last wish. But at the same time, when I'm personally going through this, I had to respond to challenges of people who were still needing help. So, you know, I was at a surreal experience that you remain a supportive daughter, you remain a supportive mother, you remain a supportive sibling, because both my sisters were not in Bombay. So, and remain a supportive teacher and remain a supportive social worker. And I think at that time I was challenged personally. There were many moments where I felt that, no, I can't do this. But then every student, every case, every client just kind of forced you that, no, you cannot give up. So I think I've emerged from it stronger at the cost of a huge loss. But then again, an interesting thing was that while we were busy helping out the migrants, the women and everybody, I remember one lady police constable telling me that, ma'am, आप सबके बारे में सोच रहे हैं, हमको तो मास्क तक नहीं मिला. And you know, there were lots of these, if you remember, कि police लाठी मार रही है, police ये कर रही है, police वो कर रही है. And at that point we realized कि police को actually पता ही नहीं कि respond क्या करना है. They had equal half knowledge that we had regarding the disease. They were told कि आप किसी को आने नहीं दो, आप किसी को नहीं आने दो, curfew situation means डंडा मारो. अब वो डंडा ही मार रही थी, तो टेक्निकली फंक्शनली वो गलत नहीं थी, वो प्रिंसिपली गलत थी. So then getting back to them saying that, you know, these are the laws, because they didn't even know that Disease Epidemic Act क्या होता है, कर्फ्यू के अंदर क्या करना है, इसके अंदर क्या करना है. At the same time, they were getting conflicting messages. एक ऑफिसर कह रहा है आप बंदोबस्त करो, एक ऑफिसर कह रहा है आप जाके हॉस्पिटल को प्रोटेक्ट करो, एक कह रहा है कि वहाँ पे सप्लाई ट्रक को पकड़ लिया, आप उसको सेफ गार्ड करो. So one person responding to multiple things. So amongst all of them, the women constables, that, ma'am, even our children are at stake, even my family. And then a lot of policemen got infected.
So I still remember that this police officer called up and for a certain case at 3 in the night, he said, "Madam, कोई बात नहीं, आप घर बैठे ही हमको help कर दो, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, आप." So I said, "No, I'll come." And I remember the look on the face of all the policemen in the 3 o'clock in the night, saying that, यहाँ आके आपने बस एक चीज बता दी कि ठीक है, आपको पता है कि हम किस दुख से गुजर रहे हैं, क्योंकि हमारी सुनवाई के लिए. So then I started talking about them. And at every point as a woman, I was attesting to the experiences of women police officers. At every point as a woman social worker, I was trying to deal with a dominant patriarchal social work police station, which was actually not very masculine at that time. It needed help. So if you ask me that as a woman, how did I respond? I responded like all the women who are participating today, because everyone has risen up to the occasion. I responded like any responsible citizen. So I include the men in my response. I tried and hoped that हमारे यहाँ रहने से at least किसी की जिंदगी को positive impact करो. And your own loss is never bigger than the other's loss. That is one huge learning that I gained from this personally. Thank you so much, ma'am. In fact, hats off to you to share all those experiences with us, because I totally understand and I totally agree with your statement that ये एक वो समय था जिसमें हम सब जो भी कुछ कर सकते थे कर रहे थे. आपकी बातों से मुझे अभी याद आता है कि जब हमें ये लगा कि हम क्या कर सकते हैं, घर में सिर्फ आइडियली बैठकर सिर्फ क्लासेस नहीं कर सकते हैं. वी आर सोशल वर्कर्स, सो वी हैव टू मूव टू द फील्ड. मुझे आज भी याद है जब व्हेन आई टॉक टू माय स्टूडेंट्स कि क्या करना है, बिकॉज स्टूडेंट्स वर कॉलिंग अस, मैम क्या करें, कैसे करें, हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. तो मुझे अभी भी याद है कि बहुत ब्यूटीफुली ऑल ऑफ आवर स्टूडेंट्स दे हैव डिसाइडेड कि हमें कैसे फील्ड में काम करना है. ऑल्दो फिजिकली नहीं जाएंगे बट वर्चुअल मोड में हम कैसे हेल्प कर सकते हैं. दे फॉर्म दी व्हाट्सएप ग्रुप्स, दे फॉर्म दी ईमेल ग्रुप्स, और बहुत अच्छा नेटवर्किंग इन लोगों ने किया. Our alumnus, I mean hats off to our alumnus also. उन्होंने बहुत अच्छा काम किया. और मैं देखती थी कि एक मैसेज ग्रुप पर आता था, कोई भी एक मैसेज आता था कि ये नीट की जरूरत है, कोई लीड है क्या, और इमीडिएटली ऐसे किसी का नाम नहीं लिखा होता था कि कौन वो लीड देगा, बट इमीडिएटली 2-3 रिस्पॉन्सेज आ जाते थे कि हाँ यहाँ जा सकते हैं, वहां जा सकते हैं, ये कर सकते हैं. तो वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था. ऑल्दो कभी कभी ऐसे भी फेजेस आते थे जब बच्चे पूरा दिन मेहनत करने के बाद कुछ नहीं कर पाते थे और रात में दे यूज्ड टू क्राई, कि आज मीटिंग के टाइम पर मुझे याद है लिटरली ये रोते थे कि आज हम इतने लोगों को मदद नहीं कर पाए और हम कर सकते थे, क्या करें. तो उस वक्त उन बच्चों को वो सपोर्ट करना और बहुत ही एक ब्यूटीफुल बॉन्ड मैंने अपने बच्चों के बीच में देखा. एंड मैम जो पर्सनल लॉस हम लोगों के फैमिलीज में रहे वो भी मैं बिल्कुल एडमायर करती हूँ. ऑल ऑफ अस मेन और द वुमेन, ऑल ऑफ अस हम लोग एक दूसरे के साथ खड़े रहे और अभी भी इन सब चीजों को हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे सॉर्ट आउट करें. सो थैंक यू सो मच डॉक्टर रुचि कि आपने ये सब हमारे साथ शेयर किया. I'll just share one case, one very yes. It still challenges me. It's still not over. So there was this woman who used to stay with her elderly mother in Patna. They both got positive. They both got admitted. And their extended family was in Calcutta. They were alone. The daughter of passed away. The elderly woman who was COVID positive was in the hospital. The extended family was trying to get in touch with someone who would help. Okay, but they couldn't. So via medium through networks, it came to us. And just out of luck, there was a particular bureaucrat whom we were in touch with for some other work. So he took personal interest. HelpAge came on board because she was a senior citizen, an old lady all alone in the hospital. And some of our alumnus in Patna, they got together and organized an RT-PCR test. She tested negative, but they could not tell her that her daughter had passed away. Okay, so every time, and the hospital bills, the hospital had, done up a bill of crazy proportions.
So that bureaucrat took personal interest. He got the bills. He said, now you explain it to me that if they've been here for 15 days, how is the bill up to 17 lakhs? So he took care of it and it was brought down. It was paid up by the extended family. The woman kept saying, I will not move from the hospital till I see my daughter. The daughter had, the last rites were done because COVID patients, you know, there's a protocol already in place. So then finally students went and said that, Auntie, we will tell you about her. She was shifted to a helpage senior citizen care place. And the second day she was told about her daughter, third day she passed away. So, you know, such stories make you shiver that despite having extended family, nobody could be there at their last minute. And even today we are fighting. I mean, you know, we're not fighting, we're trying to get support so that whatever has been left behind goes to the extended family. So it's, there are lots of stories where no matter how well endowed you are, rich or poor, stories of suffering are the same across. So, and I really want to use this platform to say that if we were able to respond to strangers at that point of time, today when the country is facing a whole lot of challenges, forget your differences, come together. Now back to you, Manju. Thank you so much. In fact, that reminds me one of my experience also, and I would like to share it at this forum because my alumni students were associated with it, and Alumni Association of Indore School of Social Work was associated with it. Robin Rena Foundation, Prayas Jahangir Puri, and many more organizations were associated with that case. It was a case of one of my junior, a very loving and affectionate person. He suffered from the COVID और फैमिली को पता ही नहीं लगा कि कब कोविड हो गया और बिल्कुल ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो गया था. उसकी वाइफ उसको एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल लेकर घूमती रही, कहीं एडमिशन नहीं मिला. लास्ट में एक हॉस्पिटल में हाँ हुई, वो वहां तक पहुंची 7 हॉस्पिटल घूमने के बाद, और जब वो वहां पहुंची तो एंट्रेंस तक पहुंचते पहुंचते ही वाज नो मोर. बहुत पेनफुल था क्योंकि I want to share the name also here, अर्जुन. और अर्जुन खुद प्रयास जहांगीरपुरी का स्पॉन्सर्ड बच्चा रहा और एक जर्नी उसने तय की. दिल्ली के हिंदू कॉलेज से पढ़ा और फिर इंदौर स्कूल ऑफ सोशल वर्क से मास्टर्स किया, प्रयास जहांगीरपुरी के साथ जॉब किया, फिर रॉबिन रैना के साथ काम किया. तो एक बहुत ही ब्राइट बच्चा जो नहीं रहा, एंड इट वाज अ पेन फॉर ऑल ऑफ अस. हम सब हिल गए थे उस वक्त. हम सबको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, कैसे अर्जुन को मदद करें. पहले तो ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो है नहीं, और फिर जब ये समझ आया कि उसकी वाइफ सिर्फ 8th तक ही पढ़ी है, वो जॉब में भी बहुत अच्छे जॉब में नहीं जा सकती है, तो क्या किया जाए. एंड हमारी जो एसोसिएशन है इंदौर से, अलुमिनाई एसोसिएशन, हम सब ने ये डिसाइड किया कि फाइनेंशियली तो हम सब कंट्रीब्यूट करेंगे ही करेंगे, जितना बेटर हम कर सकते हैं. हमने कुछ टारगेट फिक्स किए और अपने पूरे एसोसिएशन को उसमें इन्वॉल्व किया. उसके बाद आई टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव हर अ साइको सोशल सपोर्ट. One of my friend took the responsibility to coordinate with the organizations, and हमारी participants में हमारी एक student है रुखसार. रुखसार has also taken the responsibility to do all the networking with Robin Rena Foundation and Prayas Jahangirpuri, क्योंकि वो बहुत closely इन दोनों organizations के साथ जुड़ी हुई थी. और रुखसार खुद भी क्योंकि अर्जुन के साथ बहुत जुड़ी हुई थी, अर्जुन भी उनकी एजुकेशन को स्पॉन्सर करते थे. बहुत अच्छे इंसान. तो अब चैलेंज था कि क्या किया जाए. फाइनेंशियली तो हेल्प कर दिया, साइको सोशल सपोर्ट भी कर दिया, बट ये तो सस्टेनेबिलिटी नहीं है. क्या किया जाए. सब ऑर्गेनाइजेशन से बात हुआ और सबने कहा कि 8 तक जो इनकी एजुकेशन है उसके बेसिस पर हम इन्हें बहुत ज्यादा कुछ अच्छा पे नहीं कर पाएंगे. 5,000 6,000 इससे ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 8,000. तो फिर नेटवर्किंग किया, फिर सब देखा कि कहाँ से क्या हो सकता है. उनका CV सर्कुलेट किया गया और नाउ शी इज वेल सेटल्ड इन वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ नाइस पैकेज, और उनको मोटिवेट किया कि अपनी एजुकेशन को आप आगे बढ़ाएं ताकि आप ज्यादा अच्छा जो है कर सकें. और उनके बच्चों की एजुकेशन भी जो है हमारे NGOs है कुछ जिन्होंने स्पॉन्सर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली. सो दिस इज यू नो एट दिस प्लेटफॉर्म डॉक्टर रुचि, मतलब मैं यहाँ पर जितने भी एसोसिएशंस आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं उनको भी थैंक यू करना चाहूंगी क्योंकि इस पूरे
समय में जितना अच्छे से ऑल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने जिस तरह से इनिशिएटिव्स लिए, वो भी काबिले तारीफ है. So thank you everyone who are present over here and who helped in this COVID-19 times. To everyone, thank you so much. Thank you. Thank you, Dr. Ruchi, and please stay with us because we must be having certain queries with the students and we would like you to share your more experiences with us. Thank you so much. Now, to move ahead with our program, I would like to invite Ms. Ritu Sharma. Good afternoon, Ritu. Very good afternoon, ma'am. It is my, privilege that I'm introducing you, and I'm going to have an interaction with you, Ritu. And I'm calling you Ritu because I feel कि बहुत connected feel होता है जब अपने बच्चों के साथ बात करने का मौका मिलता है. So, डॉक्टर रितु जो है वो प्रोग्राम ऑफिसर है अलायंस इंडिया के साथ, और HIV एड्स में उनका बहुत एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है. रितु जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि HIV एड्स खुद में एक चैलेंजिंग सिचुएशन है और उस पर COVID-19. So, in this phase, we would like you to share your experiences in dealing with HIV AIDS cases, and I'm sure you must have had a lot of challenges. So, over to you, Dr. Ritu. Thank you so much, ma'am. First of all, thank you to the entire team for inviting me to this event and just giving me the opportunity for being a part of this panelist. So definitely, अभी मैं दो speakers को पहले ही सुन चुकी हूँ, and really the stories from their side was very inspiring as a part of women empowerment. But definitely अगर मैं HIV की बात करूँ, AIDS की बात करूँ, तो हम जानते हैं कि HIV कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जो आज भी हमारी सोसाइटी में एक हिडन कम्युनिटी है, जो कि सामने आती नहीं है क्योंकि उसके साथ एक स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन एसोसिएटेड है. तो कोविड का सिचुएशन ऐसा सिचुएशन रहा जो शायद हम सबने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा. स्ट्रेटजीज को बनाना, उनको इम्प्लीमेंट कर पाना उस 2 महीने के लॉकडाउन के बीच में हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था. और ART की अगर मैं बात करूं, HIV की बात करूं, तो HIV से बचने का एकमात्र इलाज जो सारे PLHIVs के पास है वो सिर्फ एक ART मेडिसिन है. और ART मेडिसिन भी एक PLHIV के लिए एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है. Once a person has been started their ART medicine, they have to take the pill till the last day of their life. तो उस टाइम पे the people were very scared. They were not willing to come outside from their home, and even government also asked them to stay at the home. All the hospitals where people were getting the ART were converted into the COVID hospitals. They were restricted to get entry in the hospital. And those who could manage to come to the hospital, they were not allowed because HIV already एक ऐसा disease है जो कि immunocompromised है. शुरुआत में कोविड का फेज हम सबने देखा कि कोई भी कोविड का मेडिसिन नहीं था. लोग अपने अपने अंदाजा लगा रहे थे कि ये मेडिसिन लेंगे तो शायद ठीक हो जाएंगे, वो मेडिसिन लेंगे तो शायद ठीक हो जाएंगे. लास्ट में सिर्फ एक बात निकल कर आई कि अगर आपको HIV, आपको कोविड से बचना है तो आपको सिर्फ अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखना होगा, जिसके लिए हम सब ने देखा कि आयुष मंत्रालय ने भी बहुत सारी काढ़ा इन्वेंट किए, बहुत सारी चीजों को इन्वेंट किया जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप कर सके. लेकिन HIV में वो हमारे लिए अगेन एक चैलेंज था क्योंकि HIV ऑलरेडी एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डिजीज है. ऑलरेडी वो लोग हैं जिनका ऑलरेडी CD4 बहुत कम है, उनकी इम्यूनिटी बहुत लो है किसी भी प्रोस्टेटिक इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए. समहाउ उन लोगों का हॉस्पिटल तक आना, ART मेडिसिन को रिफिल कराना, क्योंकि हर महीने पेशेंट को हॉस्पिटल आना होता है, हर महीने उसको अपना रूटीन चेकअप कराना होता है, फिर डॉक्टर मेडिसिन को रिकमेंड करता है. इस दौरान 2 महीने 2.5 महीने कोविड के दौरान कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल तक नहीं आ पाया. दूसरा, उनके पास कोई पर्सनल व्हीकल नहीं था. सारे जितने भी हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम थे सब बंद कर दिए गए थे गवर्नमेंट के थ्रू. तो कहीं ना कहीं वो ART रिफिल कराना हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था. दूसरा, जो लोग घर पर थे, जिन लोगों को डेली पता चल रहा था कि कोविड क्या है, कोविड कैसे इफेक्ट करता है, कोविड कैसे लाइफ के लिए थ्रेटनिंग इफेक्ट है, दे पीपल वर सफरिंग विद दिस साइकोसोशल ट्रॉमा लाइक कि मैं ऑलरेडी HIV पॉजिटिव हूँ, ऑलरेडी मेरी इम्यूनिटी तो है ही एक कॉम्प्रोमाइज्ड फैक्टर में, ऊपर से कोविड अगर मुझे हो गया तो मैं क्या करूंगा. एंड इफ यू सी द डेटा, 40% of the PLHIV are suffering with the comorbidity. Comorbidity means they are having the tuberculosis, they are having the sugar, they are having the BP issues. तो उस दो
disease के अलावा on the top of these two disease having a COVID issue was again a threat for all the pale HIV community. तो वो हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था. इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो LFU लोगों के लिए मेडिसिन हम लोगों ने डिसाइड किया कि विल फॉर्म अ ग्रुप. हम लोगों ने अपने फील्ड वर्कर्स को तैयार किया कि you people will collect the medicine from the RT center and you will go to the home of the PLHIV and you will distribute the medicines. But again, because of the issue of stigma and discrimination, people didn't disclose their identity to their family member that they are the PLHIVs, that they belongs to the HIV community. तो लोगों ने मेडिसिन लेना भी इनकार कर दिया क्योंकि आप आओगे हमारे घर, हमें मेडिसिन दोगे, हमारा स्टेटस रिवील हो जाएगा and will become a part of the stigma. तो वो एक और हमारे लिए चैलेंज रहा कि किस तरीके से हम लोगों को बाहर लेकर आए, किस तरीके से लोग अपने आप को बाहर ला करके मेडिसिन ले पाए. और सबसे ज्यादा चैलेंजिंग अगर मैं किसी फील्ड की बात करूं तो वो फील्ड वाज द प्रेग्नेंट वीमेन ड्यूरिंग द COVID-19. The pregnant women were strictly denied from the government that you will stay at the home, you will not come to the hospital until and unless there is an emergency. But as we all know, positive, HIV positive plus pregnancy, it's already a very high risk situation for any of the women. So they were completely denied, but they were in our observation कि क्या उनको इफेक्ट हो रहा है, क्या उन लोगों को मेडिसिन देनी है, चाहे उनको कैसे मैनेज कराना है, हॉस्पिटल कैसे लेकर आना है. उसके बाद जो सेकंड इशू था दैट वाज द न्यूट्रिशन टू द PLHIV कम्युनिटी, स्पेशली फॉर द प्रेग्नेंट वीमेन. क्योंकि एक तो ऑलरेडी दे बिलोंग्स टू अ वेरी लोअर इनकम ग्रुप, प्लस 2 महीने तक कोई रोजगार नहीं था, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था. दे वर नॉट एबल टू मैनेज इवन अ बेसिक न्यूट्रिशन फॉर देमसेल्फ एज वेल एज देयर बेबी. तो उन लोगों के न्यूट्रिशन को लेकर के एक बहुत बड़ा चैलेंज हम लोगों के सामने आया. इसके अलावा उन लोगों को डेली काउंसलिंग करना, उन लोगों तक पहुंच पाना, एज वी ऑल नो बिफोर टेस्टिंग ओनली द काउंसलिंग इज द पिल फॉर द PLHIV कम्युनिटी, जो उनको साइको सोशल ट्रॉमा से कहीं ना कहीं बाहर निकालने का काम करता है. बट लोग हमारे साथ फिजिकली कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे थे. दे वर नॉट एबल टू यूज द वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स क्योंकि स्मार्टफोन नहीं है, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है. एंड अगर वो दोनों चीज है भी तो दे पीपल आर नॉट वेरी यूज्ड टू ऑफ यूजिंग दिस सच काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स. तो डॉक्टर्स के पास स्पेशली अगर मैं थर्ड लाइन केसेस की बात करूं, as we all know there are 3 lines in the HIV, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन. थर्ड लाइन इज द लास्ट लाइन, जिसके बाद तो लाइफ की एक एक्सपेक्टेंसी ही खत्म हो जाती है. बट थर्ड लाइन पेशेंट्स का एक सेशअप ग्रुप होता है जो कि डॉक्टर पैनलिस्ट COE जो हमारे हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, वहां पर वो 1-to-1 कम्युनिकेशन होता है उन पेशेंट्स के साथ जो कि इमीडिएट होता है, क्योंकि आप थर्ड लाइन के पेशेंट्स को डिले नहीं कर सकते. लेकिन इस कोविड ने 2.5 महीने का एक बहुत बड़ा गैप डॉक्टर और पेशेंट के बीच में क्रिएट कर दिया, जिसमें थर्ड लाइन के पेशेंट्स कभी सामने आ नहीं पाए, डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट नहीं कर पाए, और समहाउ हम लोगों ने मैक्सिमम 4 to 5% PLHIV कम्युनिटी के लोगों को खो भी दिया. तो ये बहुत सारे चैलेंजेस थे, क्योंकि जब तक हम कुछ समझ पाते, जब तक हम बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजाइज कुछ कर पाते, तब तक तो उन लोगों की लाइफ को बहुत बड़ा खतरा ऑलरेडी हो चुका था. तो ये कुछ चैलेंजेस थे हमारे HIV फील्ड के, जो कि COVID-19 के दौरान हम लोगों ने फेस किए. थैंक यू रितु जी, क्योंकि ये सब एक्सपीरियंसेस अपने आप में ही बहुत मायने रखते हैं. और हमने अक्सर देखा है कि HIV एड्स में खुद क्लाइंट को क्योंकि बहुत ज़रूरत होती है कि बहुत सारी चीज़ें टाइमली हो, चाहे वो ART लेना है या प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट लेना है, और ऐसे में हॉस्पिटल विजिट भी नहीं वो कर पा रहे थे, तो वो एक चैलेंज तो है. और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम हमारे जो बेनिफिशियरीज हैं उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे. एंड उसका बहुत बड़ा जो कारण था वो यही था कि वो वर्चुअल मोड में उन्हें क्लैरिटी ही नहीं था कि कैसे हमें जुड़ना है. तो रितु जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि कोई वेलफेयर स्कीम आपको इस ड्यूरेशन में ऐसा लगा कि कोविड स्पेसिफिक PLHIVs के लिए इंट्रोड्यूस की गई हो? या डेफिनेटली हम लोगों के लिए हम लोगों ने शुरुआत में सारे फैक्टर्स को एनालिसिस किया कि कम्युनिटी को क्या जरूरत है मेडिसिन के अलावा. मेडिसिन की तो डेफिनेटली हमने अपने फील्ड वर्कर्स को मोबिलाइज किया. दे कलेक्टेड द मेडिसिन फ्रॉम द RT सेंटर्स एंड दे डिलीवर्ड द मेडिसिन टू द PLHIV एट देयर डोर स्टेप. तो एक वो इशू तो हम लोगों का कहीं ना कहीं मैनेज हो गया था. उसके अलावा हम लोगों ने वी स्टार्टेड टू राइट द प्रपोजल टू द डोनर्स, लाइक
ग्लोबल फंड को हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स लिखे, हम लोगों ने यूएनएड्स को लिखे, सीडीसी को प्रोजेक्ट्स लिखे, हमने गवर्नमेंट्स को भी प्रोजेक्ट्स लिखे, जिसमें हम लोगों ने उनसे फाइनेंशियल हेल्प मांगी थी, जिसमें हम लोगों को हेल्प भी मिला। अगर आप देखेंगे अभी एक सुप्रीम कोर्ट ने भी एक डिसीजन पास किया था 29 सितंबर को कि जितनी भी हम लोगों की फीमेल सेक्स वर्कर्स हैं या फिर पीएलएचआईवी कम्युनिटी है, उन सबको हम लोग राशन किट डिलीवर करेंगे थ्रू नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस। तो हम लोगों ने हर एक स्टेट से उनका बेनिफिशियरीज का लिस्ट मांगा, उस लिस्ट के बेसिस पर वी स्टार्टेड, हम लोगों ने फिर उन लोगों के लिए राशन किट्स प्रोक्योर किए और हर स्टेट में किट्स को डिलीवर कराया। प्लस अपने कोविड-19 जितने भी हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, सब लोगों के लिए हम लोगों ने सैनिटरी किट्स प्रोवाइड कराई। उसके अलावा हर एक स्टेट को हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि जो भी उनके स्टेट में एग्जिस्टिंग वेलफेयर स्कीम्स हैं, लाइक जैसे मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में बिहार शताब्दी योजना है, तमिलनाडु में सेवा योजना है, दिल्ली में फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम्स है। तो हमने हर गवर्नमेंट को अप्रोच किया कि जितना जल्दी हो सके वो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में ना पड़ते हुए पीएलएचआईवी कम्युनिटी को फर्स्ट लाइन पर आकर के फाइनेंशियल हेल्प, राशन किट हेल्प, सैनिटरी किट हेल्प, जो भी हेल्प उनसे बन सके वो हेल्प उनको दे। प्लस हम लोगों ने सीएलएचआईवी और प्रेग्नेंट वीमेन को सबसे ज्यादा फोकस किया, क्योंकि उन लोगों को यही एक ऐसी कम्युनिटी है जिसको न्यूट्रिशन के लिए सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट थी। तो हम लोगों ने डबल ऑर्फन, सिंगल ऑर्फन, हर एक कैटेगरी के बच्चे को कैश भी हम लोगों ने उनको दिया, 1500 पर मंथ कैश दिया, ताकि वो अपनी बेसिक न्यूट्रिशन जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल कर सके। सिमिलरली प्रेग्नेंट वीमेन के न्यूट्रिशन के लिए हम लोगों ने उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम दी। तो इस तरीके से हम लोगों ने उनके लिए ये कुछ हम लोगों की लाइक हेल्प थी, जो हम लोग समहाउ मोबिलाइज करके डोनर के साथ एक कॉन्वर्सेशन करके मोबिलाइज कर पाए और कम्युनिटी तक पहुंचा पाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रितु जी, क्योंकि ये वेलफेयर स्कीम्स बहुत ज़रूरी है और उनका अवेयरनेस होना भी बहुत ज़रूरी है ताकि वो उसको अवेल कर सके। रितु जी, आपके कुछ अपने एक्सपीरियंसेस अगर आप हमारे साथ साझा करना चाहें तो, क्योंकि आई एम श्योर वर्क और होम लाइफ मैनेज करना आपके लिए भी उतना आसान नहीं रहा होगा, तो कोई एक्सपीरियंस अगर आप हमारे साथ शेयर करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। डेफिनेटली मैम, एक विमेन होने के नाते और हम लोग सब ने रियली बहुत चैलेंज, तो डेफिनेटली हम लोग लाइफ नॉट कोविड, इसके अलावा भी बहुत चैलेंज है जो हम लोग अपनी हर लाइफ में रोज कहीं ना कहीं तो फेस करते ही हैं। बट अगर मुझे रियली अपॉर्चुनिटी मिलती तो मैं कोशिश करती कि अगर मेरे बच्चे उस सिचुएशन को बता पाते, क्योंकि बीइंग अ मदर having 2 small kids during COVID-19 was really a very scary situation for me. एंड जैसे आपने शुरुआत में कहा कि आप 1 साल तक नहीं जा पाए थे कहीं भी बिकॉज द पीपल बिलोंग्स टू द हेल्थ फील्ड। मैं अपनी फैमिली में इकलौती ऐसी थी जो कि हेल्थ सिस्टम से जुड़ी हुई हूँ, हॉस्पिटल सेटिंग में काम करती हूँ या फील्ड में काम करती हूँ, बाकी सब लोग इस फील्ड से जुड़े हुए नहीं थे। तो मुझे रियली इस तरीके से मेरी फैमिली देखती थी कि लाइक कि शायद मैं ही उनके लिए एक बहुत बड़ा कॉन्टेक्ट बनने वाली हूँ कोरोना का, और जो कि डेफिनेटली उनकी भी गलती मैं नहीं कहूंगी। फर्स्ट वेव सेकंड वेव ने रियली हम लोगों को इतना तोड़ दिया था कि एक छोटी सी भी गलती हम किसी की नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे थे। तो मैं खुद कोरोना पॉजिटिव थी, आई आइसोलेटेड माई सेल्फ, मेरे बच्चे बिल्कुल अलग से आइसोलेट हो गए थे, एंड डेफिनेटली आई रियली लॉस्ट माई फादर इन द सेकंड वेव। उसके अलावा मैं पूरा 20 डेज तक पूरा आइसोलेट थे। बच्चे इस तरीके से देखते थे कि शायद पता नहीं मम्मा कभी वापस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आई वॉज आइसोलेटेड इन अ रूम। मैं कॉल भी अगर किसी रिक्वायरमेंट के लिए करती थी तो पूरी फैमिली को वो एक डर क्रिएट हो जाता था कि पता नहीं फोन आया है ऋतु का, तो पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा होगा, कहीं उसका ऑक्सीजन ड्रॉप तो नहीं हो रहा है, कहीं उसका कोई और तो उसको सिम्टम निकल कर नहीं आ रहा है। प्लस उसके अलावा थोरोली आई वाज इन द कांटेक्ट ऑफ माय फ्रंट लाइन वर्कर्स, क्योंकि रात को 11 बजे भी कॉल आ रहा है, रात को 12 बजे भी कॉल आ रहा है। एंड यू नॉट बिलीव मैम, एक एम्बुलेंस का सायरन तक वो कंडीशन क्रिएट कर देता था ना कि लाइक कि ये लगा लो कि बिल्कुल हम लोग जैसे बिल्कुल मर के वापस निकले हो, वो सिचुएशन हम लोगों की थी। पर्सनली हम लोग उस सिचुएशन में थे, फैमिली सफर कर रही थी, प्लस मेरे खुद के फ्रंटलाइन वर्कर फील्ड में थे। आप देखेंगे मेरे जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर थे, दे ऑल बिलोंग्स टू दी पीएलएचआईवी कम्युनिटी। वो ऑलरेडी खुद एचआईवी पॉजिटिव है, तो वो खुद फील्ड में आकर के काम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं उनका हेल्थ कंसर्न मेरे लिए बहुत बड़ा एक स्ट्रेस था, क्योंकि आप ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डिजीज के साथ सफर कर रहे हो, फिर आप फील्ड में भी जा रहे हो, आप कैसे टैकल करोगे, ये रियली एक बहुत बड़ा चैलेंज था हम लोगों के लिए। मैंने इस दौरान अपने 28 फ्रंटलाइन वर्कर्स को
भी खोया, जिसमें से 150 ऑलमोस्ट कोविड पॉजिटिव थे। तो वो फैमिली में एक ट्रॉमा होना, फिर फील्ड में भी वो ट्रॉमा होना, पर्सनली प्रोफेशनली आई वाज कंप्लीटली ब्रोकन एट दैट टाइम। माय फैमिली स्टार्टेड टू से रितु तुम ये जॉब छोड़ दो, तुम ये चीज में मत पड़ो, बट आई वाज सेइंग कि मैं जॉब छोड़ दूंगी वंस द सिचुएशन ऑफ कोविड इज नॉर्मलाइज्ड, क्योंकि आप उस सिचुएशन में आप नहीं छोड़ सकते जब ऑलमोस्ट 400-500 लोग आपके एक एक्ट पर आगे चलते हैं। आप एज ए लीडर आप उस चीज को अगर बैकआउट करेंगे तो आप सोसाइटी में क्या मैसेज पास करेंगे। तो रियली उस टाइम पे पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कर पाना बहुत मुश्किल था। आप अपने वर्कर्स के सामने रो भी नहीं सकते, आप अपने वर्कर्स के सामने अपनी टूटी हुई कंडीशन भी नहीं दिखा सकते। I was really, people were sharing their experiences कि मेरे फादर चले गए, मेरी मदर चले गए। Nobody was aware कि मैंने खुद अपने फादर को खोया है। बहुत टाइम के बाद लोगों को पता चला कि मैम वो सफरिंग विद द सेम इशू, लेकिन रियली उस टाइम पे उस लाइफ को बैलेंस कर पाना एंड आई कांट एक्सप्लेन द पेन ऑफ माय किड्स, जिनको सिर्फ ये पता था कि कोविड पॉजिटिव होना मींस द लाइफ इज गॉन। उनको बिल्कुल ये लग रहा था कि पता नहीं मम्मा वापस आएगी भी कि नहीं आएगी। तो दीस वर द चैलेंजेस जो हम लोगों ने पर्सनल प्रोफेशनल लेवल पर फेस किए। I really feel sorry for क्या बोलूं बिल्कुल ठीक कह रहे हो रितु, क्योंकि जो भी सब रहा सीन उसमें कोविड हो जाना एक अपने आप में टेरर सा लगने लगा था। थैंक यू सो मच रितु फॉर शेयरिंग ऑल दिस थिंग्स। आई वांट टू गिव यू हग, बट वर्चुअल मोड है तो ऐसे ही समझ लो कि मैम ने मुझे जोर से एक हग दिया है, और ऑल सपोर्ट इज देयर फॉर यू। You can come to us anytime. Love you. I know, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you. With this, I know कि ये जो पूरा फेज है COVID-19 वाला बहुत पेनफुल रहा, बट हमारे साथ हमारी एक बहुत अच्छी स्पीकर जुड़ी हैं अपूर्वा मैम। मैं बहुत टाइम ऑलरेडी ले चुकी हूँ। आई ट्राई कि मैं जल्दी इसको रैप अप करने की कोशिश करूंगी शाहीन जी का इंटरेक्शन के बाद, क्योंकि शाहीन जी अपने आप में हमारे लिए एक रोल मॉडल है। और आई वेलकम शाहीन जी। गुड आफ्टरनून शाहीन जी। शाहीन जी आप मुझे सुन सकते हैं? शाहीन जी unmute yourself please. नमस्कार शाहीन जी। और मैं अपना कुछ भी शुरू करने से पहले आप सबको हाथ जोड़ के नमस्ते कहती हूँ, और ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे अपना हिस्सा बनाया या अपना हिस्सा समझा, एक बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, बहुत अच्छा भी लग रहा है। मैं अपना परिचय देने से पहले कुछ कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक राइटर हूँ, तो कुछ लाइनें हैं जो मैंने लिखी हैं वो मैं आप सबको पहले सुनाना चाहती हूँ। ऐ जिंदगी हाथ थाम साथ चलेंगे, कहीं हंसते कहीं मुस्कुराते, कदम तो मिला ही लेंगे। तो ये मेरी जिंदगी की शुरुआत है, इसीलिए थैंक यू आप लोगों से जुड़ने के लिए मेरे को, और थैंक यू आपको मुझको जोड़ने के लिए। थैंक यू शाहीन जी। और मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट करने ही वाली थी कि आप हमें कुछ सुनाएं, पर कभी कभी होता है शायद दिल की बात मेरी बहुत जल्दी आप तक पहुंच गई। और शायद ऐसा इसलिए हुआ कि आपसे जब मेरी बात शुरू हुई तो मुझे पता लगा कि हम पहले भी किसी एक सेशन में मिल चुके हैं। मैं बर्नआउट इश्यूज पर बात कर रही थी काउंसलर्स के, और आप इस सेशन का हिस्सा थे, मुझे याद है। जी मैम। आज शायद हम आपके साथ एक पैनल के थ्रू रूबरू होने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच शाहीन जी। मुझे ऐसा लगता है कि आप क्योंकि स्पेशल यूनिट से जुड़े हैं, काउंसलर्स की पुलिस यूनिट के साथ काम करते हैं, और कोविड समय में हमने बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस, घरेलू हिंसा के केसेस सुने। मैं चाहूंगी आप अगर थोड़ा सा ब्रीफ में अगर हमें बता पाएं कि आपने उसको किस तरह से समझा और किस तरह से निपटाने का कोशिश किया उनको।
कोविड-19 एक ऐसा पीरियड लगा हमारे लिए कि जिसमें हमें बहुत अलग तरीके के केसेस सामने आए। हमारे केसेस तो नॉर्मली वैसे तो हमारे घरेलू हिंसा के हमारे पास हमेशा आते ही थे, कोई नई बात नहीं थी। पर अब जो नई बात थी वो सबसे बड़ी बात ये आ रही थी कि कोविड-19 में कुछ शादियां भी हुई थी और उन शादियों में कुछ लेन-देन को लेकर के या कुछ इश्यूज ऐसे आ रहे थे कि ज़्यादा समय होने की वजह से, एक दूसरे के पास ज़्यादा समय देने की वजह से वो एक हिंसा का रूप लेते जा रहे थे, जिनका ये समझ नहीं आता था कि वजह क्या है। तो वजह वो कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि वजह क्या है और क्या क्यों इस तरीके से हो रहा है। सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा था कि हमारी हेल्थ पर, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ ज़रूर थे, पर साथ होने के साथ-साथ हमें बोला जाता था सामाजिक दूरी रखिए, दूर रहिए, बात कम, मतलब एक दूसरे से डिस्टेंस बनाने की कोशिश में। लेकिन वो केसेस जो थे, वो केसेस हम फ़ोन पे देखना, फ़ोन पे हर किसी के पास वो फैसिलिटी नहीं थी कि हम फ़ोन पे हर चीज़ को उनसे बात कर पाते। टाइमिंग कोई नहीं था केसेस का, रात को भी कभी घर पे हैं हम लोग, रात को कभी 12 बजे कोई कॉल आ रहा है, कभी 1 बजे कोई कॉल आ रहा है। तो उसमें ये होता था कि मुझे मेरे साथ मारपीट हो रही है या मेरे साथ कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं, मैं क्या करूँ? तो हम केसेस को डील नहीं कर पा रहे थे, मतलब करने की कोशिश में भी, लेकिन उस चीज़ को, सिचुएशन को ये नहीं डील कर पा रहे थे कि किस तरीके से इसको निकालें। हम उनको कुछ समझाते थे, बताते थे, लेकिन उनको ऐसा लगता था कि शायद हमारी बात कम सुनी जा रही है। अब फ़ोन पे सुनना और सामने सुनना बहुत फ़र्क हो जाता था। तो उनको उनका भी मेंटल प्रेशर बढ़ रहा था और हमारा भी बढ़ रहा था इस चीज़ से, कि मेंटल प्रेशर में वो लोग अगर अपने मेंटल प्रेशर में ये कहते थे कि आप हमारी बातों को सुन नहीं रहे हैं या आप हमारी बातों को समझ नहीं रहे हैं। हम ये कहते थे नहीं, हम समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, मगर हम सामने हैं, आपसे दूर हैं, लेकिन उस तरीके से हम किस तरीके से आपको डील कर सकते हैं, आप अपनी मेन सिचुएशन बताइए कि इस टाइम हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो कुछ सिचुएशंस में उनको जैसे खाने की प्रॉब्लम थी या कहीं पर ऐसा भी लगा कि किसी को पुलिस प्रोटेक्शन की या उसकी बात आती थी, तो उनको वो चीजें बताई भी जाती थी, एक दूसरे से कांटेक्ट भी किया जाता था। फिर हम भी कई बार 100 नंबर वगैरह पे कॉल करके या 112 पे कॉल करके उस सिचुएशन को उनको डील करके बताया है कि क्या करना है आगे, हम क्या करें, हमें भी बताइए कि हम वहां तक पहुंच नहीं सकते, आप उस लाइन में हैं, आप हमारी मदद कीजिए उनके साथ। तो ये चीजें रही हमारे साथ। और सबसे बड़ी आर्थिक तंगी रही, जो पैसों की कमी थी। जो पैसों की कमी की वजह से मोस्टली केसेस ज्यादा आए, जिन्होंने उसने ये कहा कि कैसे खर्चा चलाएं, कैसे करें, क्या करें, रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है। और वो रोजगार की कमी की वजह से हमारे जो यौन कह सकते हैं या कह सकते हैं जो पर्सनल लाइफ थी, वो बहुत डिस्टर्ब हो रही थी। पर्सनल लाइफ में एक दूसरे को स्पेस नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि पूरी फैमिली एक ही घर में थी और जो टाइम दो लोगों को मिलना चाहिए था पर्सनल हस्बैंड वाइफ को, वो नहीं मिल पा रहा था। और हस्बैंड वाइफ को टाइम ना मिलने की वजह से वो झगड़े बढ़ते जा रहे थे, मतलब उसमें फिर वो मारपीट का रूप भी ले लेते थे। और बच्चे थे, बच्चों की अलग डिमांड्स थी, उनको लगता था अगर वर्किंग पर्सन है, लेडी वर्किंग है और वो घर में है, तो उनको ऐसा लगता था मम्मी तो घर में ही है या लेडी तो घर में ही है, ये काम क्यों नहीं कर रही है घर का, या घर से रिलेट क्यों नहीं हो रही है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा उस टाइम पे इफेक्ट कर रही थी हमें। और हमें भी उन चीजों का सामना करना पड़ा था एज ए पर्सन, एज ए मतलब मैं कहूँ कि मैं भी एक वर्किंग पर्सन हूँ और बीइंग ए लेडी, तो मुझे भी इन सब चीजों का सामना करना पड़ रहा था थोड़ा बहुत। लेकिन हाँ, ये है कि मेरे साथ वो सब चीज नहीं, क्योंकि मुझे सब जानते थे कि मैं करती क्या हूँ। लेकिन ये है कि जो लोग इस तरह की सिचुएशन में नहीं थे, उनके साथ ये सब चीजें दिक्कतें ज्यादा आ रही थी। तो मैं ये कहूंगी कि उनको समझाना, सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम जो थी वो थी कि उन तक हम जो कहना चाह रहे हैं वो बात पहुंच नहीं पा रही थी, क्योंकि फोन के जरिए वो सारी बातें पहुंचाना इतना आसान नहीं हो पा रहा था। और बिना सामने मिले या बिना किसी से मिलवाए उनको हेल्प करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। जी, बिल्कुल, ये चैलेंजिंग तो था ही, मतलब खुद क्योंकि बिल्कुल राइटली जैसे हमारे बाकी स्पीकर्स ने भी कहा कि इस सिचुएशन को समझना हम सबके लिए इनिशियली तो एक खुद ही चैलेंज था कि हम कैसे डील करें, क्या करें, और वो स्ट्रैटेजीज निकालना बहुत ज़रूरी था। शाहीन जी, आप हमारे लिए रोल मॉडल हैं और आपने इस कोविड समय में जो दुःख झेला और उसे हमारे साथ साझा करते हुए
हमें बताएं कि किस तरह से आपने खुद को और परिवार को संभाला, कैसे इस पूरे संघर्ष और समस्याओं को आपने डील किया। मंजू जी, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, वैसे तो मैं आपसे पहले भी मिली हूँ और हमारी काफी बातचीत हुई है उस चीज को लेकर के पहले भी। मैं एक मीडियम क्लास फैमिली से हूँ, मैं मुस्लिम फैमिली से हूँ और मेरे हस्बैंड हिंदू फैमिली से थे। तो थे मीन्स यानी कि यही कह सकती हूँ कि बहुत अच्छा टाइम रहा उनके साथ, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं रह पाए। तो इसलिए कोविड-19 के टाइम पे ही, उसी टाइम पे जस्ट उससे कुछ टाइम पहले मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड को किडनी की प्रॉब्लम है। तो हम लोग का काम बहुत अच्छा था, हस्बैंड का बहुत ही अच्छा काम था, जिसमें कि मुझे लेकिन धीरे धीरे लास्ट 2 साल पहले तक मेरी पास करीबन 15 गाड़ियां थी। उन गाड़ियों को बेचते 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 मेरे पास सिर्फ एक गाड़ी रह गई थी लास्ट में, अब से 1.5 साल पहले। लेकिन वो मेरे लिए इशू नहीं था क्योंकि कर्जा हो गया था काफी और हस्बैंड बीमार ज्यादा थे, तो उनकी देखभाल की वजह से दिक्कतें आ ही रही थी मुझे, है ना। और साथ देने वाला कोई नहीं था, मीन्स मैं कह सकती हूँ मेरी फैमिली, ना तो हस्बैंड की साइड से और ना मेरी साइड से कोई भी हम लोगों के सपोर्ट में नहीं था। हम लोग अकेले ही सारी चीजों को डील कर रहे थे। पर खुशी इस बात की थी कि हस्बैंड ठीक होते जा रहे थे, तो ये खुशी थी कि चलो ठीक है, वो ठीक होते जा रहे हैं और एक अच्छा टाइम आगे बीतेगा, आज नहीं तो कल आने वाले इन फ्यूचर अच्छा टाइम बीतेगा। पर 14 सितंबर 2020 को मेरे हस्बैंड नहीं रहे, है ना। तो सॉरी, उसके बाद 2 टीनेजर बच्चे थे, बच्चे हैं मेरे और बेटी है मेरी, एक बेटा है। दोनों छोटे हैं और उनके पास इस तरह का कुछ भी वो नहीं है कि मैं उनको किसके साथ छोड़ूं। मेरी फैमिली जो इन लॉज थे मेरे, उन्होंने सिर्फ मेरे साथ 1 वीक का टाइम दिया, जिसमें कि मेरे हस्बैंड की जो 13वीं होती है वो करने के अंदर 1 वीक के अंदर अंदर उन्होंने 13वीं की और फिर उनका कोई आज तक उनका कोई मैटर नहीं है हम लोगों से। तो नहीं समझ पा रही थी कि मैं अपने बच्चों को कैसे देखूं, कैसे चलाऊं। 20-25 दिन के बाद मैं जॉब पर जरूर आई, पर मैं जॉब में नहीं थी। एक तरीके से मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अपने आप में ही नहीं हूँ, एक अलग से डिप्रेशन में, अलग सी सिचुएशन में चली गई थी। इतनी अलग सिचुएशन थी कि बच्चों को भी देखना है, खुद को भी देखना है, घर भी चलाना है और जो कर्जा हस्बैंड छोड़ गए आने के बाद उनके जो रह गया वो भी मुझे देखना है, मगर कैसे देखूं। मुझे समझते समझते करीबन 4 से 5 महीने लगे, क्योंकि मैं एक राइटर हूँ तो मुझे लिखने का शौक बहुत टाइम से रहा। तो मैं धीरे धीरे चीजें लिखती थी, मेंटेन करती थी, लिखती थी। तो मेरी बेटी के कोच हैं, जो कराटे मेरी बेटी सीखती है उसके कोच हैं, उन्होंने मुझे थोड़ा कहा कि आप इतना लिखते हो, इसको कहीं कोशिश कीजिए कि कुछ किया जाए, इसका कहीं छपवाइए, कहीं निकलवाइए। तो अब मैंने उनकी हेल्प ली और उस हेल्प में मेरी फर्स्ट बुक, ये ए जिंदगी, मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ, ये मेरे पास फिलहाल है ना। और ये मेरी फर्स्ट बुक है जो मैंने निकाली थी। उसके बाद मैंने फील किया कि मेरी बेटी अपने फादर के जाने के बाद अजीब से डिप्रेशन में आती जा रही है। तो मैं उसे संभालने की कोशिश में मैंने उसके साथ थोड़ा टाइम बिताया। फिर मैंने उससे कहा कि बेटा, आप जो भी आपके दिल में है आप उसको लिख डालो, सिर्फ लिखो, ये मत सोचो क्या लिखना है, कैसा है, क्या है। कोई भी फीलिंग आती है, अच्छी बुरी कुछ भी। तो बेटी ने मेरे से इस बात के लिए कहा कि मम्मा मुझे समझ नहीं आ रहा मैं लिखूं क्या और क्या लिखना है। तो वो बहुत छोटी है, अभी 18 ईयर्स की अभी हुई है कम्प्लीटली नवंबर में। उससे पहले वो 16 प्लस थी जब उसके फादर नहीं हुए। तो बेटियां हमेशा फादर से ज्यादा टच होती हैं, तो इसलिए भी उसका थोड़ा सा ज्यादा ही फादर के उसमें रहा। फादर के साथ साथ फिर अकेले रहना अब उसके लिए बहुत अलग हो गया था, क्योंकि मदर वर्किंग है, मदर बाहर जाएंगी, काम करेंगी और दोनों भाई बहन सिर्फ घर पर अकेले छोटे रहेंगे दोनों। तो उनको ऐसा लगने लगा था कि मम्मी हमें टाइम नहीं दे रही है।
तो कोविड-19 के टाइम पे ही, और फिर कुछ टाइम ऐसा रहा कि वो टाइम मेरे लिए मुश्किल ये था कि मुझे बाहर भी निकलना है, जाना है और करना है कि क्या करूँ? लेकिन और उसके साथ-साथ मुझे अपने बच्चे भी देखने हैं, दोनों बच्चों को देखना है। उनको इस लायक भी करना है कि कल को उनको ये ना लगे कि फादर नहीं थे तो मदर ने हमारे लिए कुछ वो नहीं किया। और बहुत सारे बैरियर टाइप में एक लाइफ में जैसे लोगों ने बना दिए थे और उनसे भी निकलना था मुझे। उन बैरियर को लगा के मैं अपने बच्चों को आगे नहीं बढ़ा सकती थी, ना खुद को आगे ले जा सकती थी। मैंने अभी तक जो किया कोविड-19 का दौर कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, लेकिन अपने आप को तैयार किया है फिर से इस लड़ाई के लिए कि मुझे अपने बच्चों के साथ और खुद के साथ इस लाइफ को दोबारा आगे लेके जाना है। और अब मेरी सेकंड बुक अभी फिर से छपी है, अनकहे शब्द, वो अभी मेरे पास नहीं है, बट मैं जल्दी ही आप लोगों से मिलूंगी तो पक्का आप लोगों के लिए जरूर उसकी कॉपी लेकर आती हूँ, है ना। और अपूर्वा और मैंने पहले भी साथ में काम किया है, हम लोगों ने कुछ टाइम पहले किया है। और तो मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुझे अपने बात कहने का मौका दिया है। लेकिन आज मेरी बेटी ने भी बुक लिखी है, मेरी बेटी भी राइटर है, वो मुझसे अच्छी राइटर है एक्चुअल में। तो मैं तो बस यही कहूंगी कि उसकी बुक में लाई थी सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि दिस इज फर्स्ट बुक, मेरी डॉटर की है ये। और मेरे लिए ये बहुत प्राउड फील होता है कि मेरी बेटी मुझसे अच्छा कुछ कर पा रही है। और आगे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको और अच्छा कर पाऊँ। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए क्योंकि आप लोग अच्छे दोस्त मिलते हैं, अच्छे साथी मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही बढ़िया। मैं बोलूंगी कि जो अपब्रिंगिंग आप बच्चों को दे रहे हैं, दिस इज मार्वेलस। क्योंकि एक छोटे बच्चे से राइटिंग स्किल्स को उसका एक्सप्लोर करना और इतना अच्छा बुक लेकर आना। और मैं पढ़ रही थी टाइटल, पहले प्यार का पहला रूम। आई कैन वो उसके फादर का, वो उसके फादर है, पहला प्यार उसके फादर है कि वो इसीलिए जो है वो बच्चे का उसने कितने अच्छे से अपने शब्दों में बयां किया होगा। और मैं ये किताब जरूर पढ़ना चाहूंगी आपसे जब मिलना होगा। शाहीन जी, अगर कोई ई कॉपी अगर है जो हम सर्कुलेट कर सकते हैं तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा ताकि हम अपने स्टूडेंट्स के साथ सकें। ओके, दिस इज रियल सक्सेस स्टोरी एंड आप एक वॉरियर है और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए रोल मॉडल है। और आज जो एक्सपीरियंसेस आपने शेयर किए, इसको कहते हैं पॉजिटिविटी। लाइफ को ऑप्टिमिस्टिक तरीके से जीना। जिंदगी, आपने जो बुक लिखी है जिंदगी, मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है हम ये समझें कि सुख और दुख तो ऐसे ही आते रहेंगे हमारी जिंदगी में, पर उन दुखों में भी सुख ढूंढना हमें आना चाहिए। और मैं पर्सनली क्योंकि मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ और मुझे लगता है कि मेरे अपने एक्सपीरियंसेस में जरूर शेयर करूँ। और मैं आपको पर्सनली ये जरूर बताना चाहूंगी कि हम सबकी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जब हम बहुत दुखी हो जाते हैं और लगता है कि कुछ नहीं है लाइफ में। पर मैंने हमेशा एक अप्रोच को अपनाया कि ऊपर वाला जो करता है वो अच्छे के लिए करता है, इसमें भी शायद कुछ अच्छाई होगी। ऑल्दो मन ये नहीं मानता कि अच्छाई होगी, बट फिर भी मैं ये मानती हूँ कि कुछ अच्छा होगा। और मैं उसमें बहुत पॉजिटिविटी ढूंढने लगती हूँ कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ और इसके पीछे क्या अच्छा हुआ होगा। और जब मैं वो सब देखती हूँ, व्हेन आई लुक बैक इन माय लाइफ एक्सपीरियंसेस, तो मैं ये जान पाती हूँ कि हाँ, जो कुछ हो रहा था वो शायद ठीक ही हो रहा था। जब हम पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं, ऑप्टिमिस्टिक विजन की तरफ जाते हैं, तो लाइफ बहुत आसान हो जाती है। और ये सब कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं हमारे, जो हमें जिंदगी जीना सिखाती है। थैंक यू सो मच शाहीन जी। और अच्छा, मंजू जी, क्या मैं सिर्फ एक और पोएम आपको एक अपनी खुद की बुक से सुनाना चाहूंगी, जो आपको अच्छा लगे तो प्लीज। जीने की तमन्ना है मरना उधार है, जीने की तमन्ना है मरना उधार है, ऐ जिंदगी मुझे तुझसे बहुत प्यार है, ऐ जिंदगी मुझे तुझसे बहुत प्यार है, मौका है अपना हुनर दिखाने का, सबसे दूर रहकर पास आने का। जीने की तमन्ना है मरना उधार है, ऐ जिंदगी मुझे तुझसे बहुत प्यार है, बदस्तूर है जो जहर मैंने दिया, बदस्तूर जारी है जो जहर मैंने तुझे दिया,
तू भी वही देगी जो मैंने तुझे दिया। जीने की तमन्ना है मरना उधार है, ऐ जिंदगी मुझे तुझसे बहुत प्यार है। छीन छीन कर हमने उसको आदत बना लिया, छीन छीन कर उसको हमने आदत बना लिया, देने की बारी आई तो सब कुछ लुटा दिया। जीने की तमन्ना है मरना उधार है, ऐ जिंदगी मुझे तुझसे बहुत प्यार है। जो पीछे मिला वही हम आगे देते चले गए, जो पीछे मिला वही हम आगे देते चले गए। पहले कम बर्बाद थे आगे और करते चले गए। जीने की तमन्ना है मरना उधार है, ऐ जिंदगी मुझे तुझसे बहुत प्यार है। आज आवाज खोकर हमने ये जाना, आज आवाज खोकर हमने ये जाना, टूटता है दिल जब बर्बाद कैसे होता है। जीने की तमन्ना है मरना उधार है, ऐ जिंदगी मुझे तुझसे बहुत प्यार है, ऐ जिंदगी मुझे तुझसे बहुत प्यार है। बहुत बढ़िया। ऐ जिंदगी थैंक यू सो मच। बहुत प्यार है, और इसी तरह से हमें आपसे बहुत प्यार है शाहीन जी। और जिस तरह से आपने सारे एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए, और क्योंकि हम अक्सर ये देखते ही हैं कि चाइल्ड रेयरिंग जो है वो मदर की बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिस तरह से आपने ये सब हमारे साथ साझा किया, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्वेश्चन आंसर राउंड की तरफ मूव करते हुए मैं चैट बॉक्स में कुछ आंसर्स क्वेश्चंस देख रही हूँ। एक क्वेश्चन है कि जो हमारे अनसीन वॉरियर्स हैं, आईसीडी आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, जो कि रूरल एरियाज में काम कर रहे हैं, कोविड वैक्सीनेशन के लिए वो घर घर जाकर काम कर रहे हैं, उनका काम उतना रिकग्निशन में नहीं आ रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर मैं भी ऐड करना चाहूंगी, हमारी जो आशा वर्कर्स है बहुत काम कर रहे हैं, इवन सैलरी भी उतना उनको नहीं मिलता है जितना काम वो कर रहे हैं इस पूरे समय में। तो मैं चाहूंगी यहाँ पर रितु जी या रुचि जी अगर इसको आंसर कर पाए कि क्या किया जा सकता है इनके काम को रिकॉग्नाइज करने के लिए, या कैसे गवर्नमेंट मशीनरी को हम ये दिखा सकते हैं कि कितना काम ये कर रहे हैं और उस तरह से उनको रिकॉग्निशन मिले। रुचि मैम, या थैंक यू सो मच। Okay, so I would say that they're not unseen because बहुत सारे गवर्नमेंट मशीनरीज ने उनको रिकॉग्नाइज किया है, and unfortunately Anganwadi workers had to go on strike also in 2 states of South India. So technically they're not unseen any longer, but yes, what we should do is कि एक minimum जो कर सकते हैं कि गवर्नमेंट की जो वेबसाइट होती है WCD डिपार्टमेंट की, वहां पे उनके नाम वो लोग मेंशन करें कि इन्होंने, बिकॉज यू विल सी अ लॉट ऑफ न्यूज फुटेजेस कि आंगनवाड़ी वर्कर्स या PHC वर्कर्स किस डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में जाके वैक्सीन अब लगा रहे हैं दूर दराज इलाकों में, इन रूरल एरियाज, वेदर यू लुक एट नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वेदर यू लुक एट द very difficult rural areas of certain states such as Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh, you know, where access roads available nahi hai. The minimum the government should एक photo documentation honi chahiye on their website. Second, the district collectors who are already overwhelmed, with the help of NGOs, should acknowledge, क्योंकि acknowledgement मिल जाता है लोगों को बहुत एक motivation मिलता है. That acknowledgement has to go, and local media, instead of just giving us negative reports that Anganwadi workers are not going, they're not doing this, जहाँ पे एक positive story है वहाँ पे उनको भी highlight करना चाहिए. Basic minimum without infrastructure resource investment ये शुरू किया जा सकता है. Thank you so much, ma'am. There's another question जिसने पूछा है कि what are the responsibility of general public in COVID-19, except staying at home, वो बाकी क्या कर सकते हैं? I'm smiling because मैं often कई बार कहती हूँ कि लोगों के पास कॉमन सेंस होता तो शायद हम कोविड को अभी तक जीत चुके होते. सो जनरल पब्लिक को 3 चीजें याद रखनी है. दैट व्हाट्सएप फॉरवर्ड और ये सब जो अनवेरिफाइड न्यूज है उसको ना बिलीव करें, और अगर आपको लग रहा है कि वो रियल है उसको वेरीफाई करो. अगर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं. दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू. सेकंड,
staying at home is important, but if you can't stay at home, एक simple सी चीज है, आप mask पहने, because mask will prevent you from any infection up to 80%. And there Renuka can probably correct me. And wherever possible, like एक Indian mentality होती है कि कोई कहीं जा रहा है तो सबके सब छोड़ने चले गए, या अगर कोई celebration है, it is essential कि हम सब collect हो जाए, आप online meeting कर लो. Very critical close family members can come together, the rest of them can be online. आप अगर बिना मिले किसी की life safeguard कर सकते, I think that is very important. And the last and the most important thing, instead of criticizing everyone and everything around you, आप रोज आप अपने आप से एक सवाल पूछो कि आपने 2 ऐसी कौन सी चीज दी है to handle the COVID situation. And if you can list 2 things, then criticize the whole world. But if you can't list 2 things, it's like, someone said, don't ask what the country can do for you, ask what you can do for the country. And I think that holds true today. डॉक्टर रेणुका, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी कि पब्लिक मासेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी इस बीच, या इनफैक्ट इवन आज भी बनती है? Ma'am actually correctly said, like wearing a mask, actually N95, that actually prevent the droplet infection. And like in the first wave, I have noticed that people have followed this rule very appropriately. But in the second and third wave, they become very much, they didn't follow it as properly as compared to first wave. First wave में they were very much responsible. Second and third wave में आते आते लोग भी ऐसे हो गए हैं कि नहीं. And if we like in hospitals and outside, so they used to wear. But if you will go outside Delhi, like I went to UP 2 months back, then there all people were roaming around without mask. So that is one issue that should be addressed. Right. ट्रू, वेरी ट्रू. क्योंकि हमने अक्सर देखा कि जैसे ही थोड़ा सा नॉर्मल होने लगता है सब कुछ, तो हम निकल आते हैं मार्केट्स में, रेस्टोरेंट्स में हम बैठे हैं, भीड़ में बैठे हैं, क्योंकि हमें लगता है बस अब सब कुछ ठीक है. और जैसे ही थोड़ा फिर सीरियस होने लगता है, केसेस आने लगते हैं, तो अगेन वी कीप आवरसेल्व्स अवे फ्रॉम द गैदरिंग्स. तो कहीं ना कहीं एक अप्रोप्रिएट बिहेवियर की जरूरत है. मास्क अगर पहना है तो तरीके से मास्क पहनने की जरूरत है. सिर्फ ये नहीं कि मास्क पहना है दिखाने के लिए पहना है, ये जरूरी नहीं है. सो वेरी राइटली सेड. Thank you so much, Renuka ji. Thank you, Dr. Ruchi, Dr. Renuka, Ms. Ritu, and Ms. Shaheen. It was such a nice experience interacting with you all. और आज बहुत कुछ हमने सीखा, बहुत कुछ समझा. आई एम श्योर हम लोग बहुत सारे लर्निंग्स अपने साथ, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस अपने साथ लेकर जा रहे हैं. और ये जो डिफिकल्ट फेज है, जिस तरह से अभी तक हम सब साथ मिलकर चलते रहे हैं, हम और बहुत बेहतर तरीके से साथ चलेंगे, स्ट्रैटेजिकली चलेंगे. और आई एम श्योर ये कोविड-19 सिचुएशन बहुत जल्दी नॉर्मलाइज होने का कोशिश करेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू. The mic now. I would like request the students to take over. Thank you so much. Before the usual anchoring, I would like to share an announcement, a quick announcement for all the participants, that kindly note that we have shared the Google link for your entries. So kindly click on that link and submit your entries to get the certificate. Thank you so much. चलिए आगे बढ़ते हैं. एक दिन ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते कविता मिली तो बड़ी प्रभावशाली लगी मुझे, और अभी सभी पैनलिस्ट को सुनकर कुछ और ख्याल मन में आए, तो मन से कागज पर उतारकर कुछ पंक्तियां आपके सामने रखना चाहूंगी. सुनिएगा. तन के भूगोल से परे एक स्त्री के मन की गांठें खोलकर कभी पढ़ा है तुमने उसके भीतर का खौलता इतिहास? अगर नहीं तो फिर जानते ही क्या हो तुम रसोई और बिस्तर के गणित से परे उस स्त्री के बारे में? तो फिर जानते ही क्या हो तुम उस चाय की मिठास और उसकी ताजगी के पीछे छिपी हर दिन उस औरत के संघर्ष को उस रसोई में? तो फिर जानते ही क्या हो तुम उस अध्यापिका के मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे छुपी उसकी उस निराशा के साथ हर रोज लड़ाई को? तो फिर जानते ही क्या हो उस डॉक्टर के घर में रोते हुए उस बच्चे को और उसके माँ बाप के पल पल की चिंता को?
तो फिर जानते ही क्या हो तुम उस समाज सेविका को जो पूरे संसार को अपना परिवार समझती है और जितना भी कर ले उसे कम ही लगता है। तो फिर जानते ही क्या हो तुम उस स्त्री की बेबसी को, तो फिर जानते ही क्या हो तुम उस स्त्री के इतिहास को, उसके वर्तमान को, तो फिर जानते ही क्या हो तुम। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ले चलते हैं आपको संगीत प्रस्तुति की ओर। दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँव पे छाले है सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। रीति की जंजीरें खा गई जंग, न्याय के मंदिर भी हो गए भंग, जमाना चले ना चले मेरे संग, बोलूंगी हल्ला आवाज दबंग, बेखौफ आजाद है कहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है कहना मुझे। चोटे जिस्मों पर मरहम उमंग, लाश नहीं हूँ मन जिंदा पतंग, दिल में उम्मीदें और खुशियों के रंग, हर आंसू बनेगा एक नई तरंग, बेखौफ आजाद है बहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है बहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँव पे छाले है सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। थैंक यू। Wow, we definitely can't get over the marvelous song that you have sung, Pratha. Now I would request Mr. Rakesh Chaudhary, Assistant Professor, to declare the results of the essay competition. A very warm welcome and good afternoon to respected panelists, dignitaries from Vishwa Yuva Kendra, NGOs participating, faculty members and dear students. After a great discussion and a wonderful song, moving forward, I would like to bring in your notice that every year, Department of Social Work organizes different activities in the memory of one of our student, Pearl Gupta, who met with an accident outside college premises in 2007. So this year, on the occasion of Pearl Memorial Day, an essay competition on the theme Effect of COVID-19 on Differently Abled
was organized and coordinated by our faculty member, Mr. Baldev Gulati, on 24th January. For the same, I would like to announce the result. Third position goes to Ms. Riya Singh, first year Department of Social Work. Second position goes to Ms. Nupur Miglani, third year Department of Social Work. And first position goes to Ms. Arpita Dubey, second year Department of Social Work. Congratulations to the winners and all the best for the future. Once again, thanking you all to become part of this event. Now I would like to invite Professor Beena Reji for a valedictory note. Thank you so much, Mr. Rakesh. I have enjoyed every minute of this program. I have been in tears occasionally. I have, it is, and the students, they have been really good. But yes, I really want to appreciate the task given to me. I feel totally honored, and I hope I do justice. And I hope I don't miss out anyone. If I do, blame it to my age. So I have jotted down some, contributions that we got from our students, from our, our hand-holding team of VYK, and I would just try to put all of it together. So my first thank you and really heartfelt gratitude is to Vishwa Yuva Kendra. You have always helped us to unfold our dreams and aspirations, and that we want to reach out to our students, but because of our limited resources and our limited tech facility, you have come forward and you have always extended a helping hand. You have not only got us connected to the students, but also to different NGOs in the grassroots level. So a very, very big thank you to Vishwa Yuva Kendra, but I cannot stop without naming. And I want to firstly thank Mr. Uday Shankar. He has always been such a strong person, and he has been so warm, Each time I meet him, I feel I have so much to learn from him. So you're a big inspiration. And I'm sure I totally agree to your point that you said that we kind of, this NGO meet and Aditi and Vishwa Yuva Kendra kind of bridges the, the grooming buds and the persons with experience and exposure. So thank you, sir, that you've always been there. I mean, you're always there at a beck of a call. Aur wo itna acha lagta that you're there. And I feel over the years, I feel that you are, just a very integral part of NGO Meet and Aditi Social Work Department. I also want to thank Mr. Ranveer Singh, Mr. Rakesh Singh, Ms. Mukta Bhardwaj, Mr. Manjuta, Mr. Rajat Thomas, and yes, our dear Apurva Gautam. I mean, Apurva, you kind of make us so proud, and I appreciate all the hard work that you've put together to get this NGO Meet, into a big successful event. I also want to extend my heartfelt thank you to the panelists. Thank you so much for taking out your precious time. I personally want to thank each one, Dr. Ruchi Sinha, Dr. Renuka, Ms. Ritu, Ms. Shaheen Praveen. And I think, what you shared with us and the experiences that you brought to light, it kind of impacted our minds, and we could totally relate to the sadness, the problems, the suffering of the people. And you kind of individually brought out the different areas where women has really been fighting, otherwise also, and more so in the COVID time. And I truly feel the theme of today, it was so, so good. I mean, woman is a warrior. No doubt men are also warriors.
I don't believe in that. But that there is any difference between men and women. We all are the same in the heart. And but today's thing, we kind of highlight how women has been, there's so many problems that they have gone through, and today we were able to discuss that. And I want to thank the department to take up this topic. I also want to give the credit of the whole program to our principal, Professor Mamta Sharma. She is very encouraging and motivating, and she has this humongous energy, and that's really contagious, So we see her every day. She must be in 2-3 programs. I mean, that's so much of a learning, that there's a never stop kind of a energy in her. And we all, I'm totally, I really feel so good, that there is so much to do, and it just can't be one event of a day. Okay, 2-3, let's do it kind of a thing. So it's really nice. So her energy level is something that we all can learn from. I really feel obliged, deeply obliged to all our young students. They are our future and they are our ambassadors. And what better ground, where we see all our students back with us as resource persons, as, representative of different departments. It really makes us proud. But I still want to thank our current students. I know they've really worked hard, and they've always stood behind the department initiatives and the teachers. So we teachers can't do anything unless they are there. So 3 cheers to Ekta Society. I would be naming only the leaders, but I know the others have also done a lot of work. But I still want to thank Kanika, Nimisha, Kunjika, for all the hard work, Gitanjali, for all the hard work that you have done, and you've been with Rakesh sir all throughout. I also want to thank a few of the other students, and you students really make us proud. So I want to thank Shreya, Pragya, Pujita, Pratha, Nupur, Namita. Thank you for all the energy that you have, and you're there with us, with the teachers, and that really is very encouraging. I also want to formally thank my dear teachers, the team of social work department, the teaching faculty, who have worked every year, year after year. The amount of energy each one puts in, it's the energy that everyone puts in, it's just like enormous, you don't have to, but we all do it. So thanks to each teacher. And I especially want to, appreciate our department family head, Dr. Sunita Behmani, our fieldwork coordinator, Dr. Seema Rani. And I would take this occasion to thank Mr. Rakesh Chaudhary. He's worked tirelessly, and big clapping for him. And I want to also thank the other teachers who've also done a lot of coordination, Ms. Manisha Pal, Dr. Manju Goel, Dr. Mali, Dr. Anish, Mr. Baldev, and Ms. Gyanvati. I want to thank Dr. Manju Goel, who had so beautifully moderated the panel discussion. And I know you are, you have immense talent, and you showed that today. You really effectively coordinated the panel discussion. Thank you so much. I apologize if I missed out anyone, but I really want to, kind of conclude by quoting something that I really feel is very true to explain the relationship that VYK has with Adati Mahavidyalaya. I want to quote Henry Ford in when he says that coming together is a beginning, staying together is a progress, and working together is success. So, VYK, you are like with us, it has to be VYK for an NGO meet. So thank you so much. And thank you, everyone. I'm really sorry if I've missed out anyone. Thank you so much, ma'am, for your kind words. Now, I would like to conclude the event by saying these few lines.
I know that many men and even women are afraid and angry when women do speak. Because in this barbaric society, when women speak truly, they speak subversively. They can't help it. If you're underneath, if you're kept down, you break out, you're subvert. We are volcanoes. When we women offer our experiences as our truth, as human truth, all the maps change. There are new mountains. That's what I want, to hear you erupting. You young mountain who don't know the power in you, I want to hear you. Thank you everyone for patiently attending the NGO meet, participating and giving your valuable time to the event and making it a success. Have a good day. Thank you. Thank you so much. Thank you, everyone. Each and everyone. Yeah, thank you. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Beautiful program. Beautiful. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. Wishing all the best. Thank you for healthy and happy life. Yeah, bye.